व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है गाइस। क्या लगता है क्या चल रहा है, क्या होगा? अभी भी हम लोग क्यू में ही हैं, क्यू में फंसे पड़े हैं। 4 आउट ऑफ 31 वहाँ पे अपना केस जो है, केस चलने वाला है। मैंने, अगर आप वेट टाइम देखोगे तो 2 घंटा 8 मिनट ऑलरेडी क्यू में हूँ, सिल्वर प्रायर के बाद भी। बट नेवर माइंड, कोर्ट केस तो होगा। लेट्स सी, देखते हैं। आज कोर्ट केस होगा। अगर दोनों पार्टीज अवेलेबल रहती है, जज भी आ जाता है, पार्टीज अवेलेबल रहती है तो कोर्ट केस होगा। नहीं तो फिर जितने लोग अवेलेबल है उतने लोगों के साथ हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। सो लेट्स सी गाइस। वैसे भी मेरी गर्दन अकड़ गई है शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मेरे को भी जल्दी निपटाना पड़ेगा, कोर्ट केस खत्म करके जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा सोने के लिए। लेट्स सी भाई, 10 बजे कोर्ट केस होने वाला है शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। 9 बजे का टाइमिंग दिया था, उसके बाद 1 घंटे बाद हुआ, जबकि मैं 7:30 से लॉगिन की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आजकल इतनी क्यू क्यों लग रही है? क्यू क्यू क्यू, इतनी क्यू क्यू क्यू, क्या क्या बोला मैं? इतनी क्यू क्यू है। हाँ ये सही है, इतनी क्यू क्यू लग रही है। बताओ, किसी को पता है? कुछ आइडिया है? हाँ 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 हाँ। दो पे आ गए भाई हम। क्या लगता है, क्या हम लोग को करना है? पास्कल जा रहा है क्या? दो पे है, दो पे है, दो पे है। यस, एक पे आ गए। अभी देखते हैं भाई अंदर घुसेंगे या नहीं घुसेंगे। Let us see, let us see, let us see. What do you guys think? जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? चलो देखते हैं क्या होगा। ट्वीट मारना पड़ेगा आने के बाद। जैसे ही आएंगे अंदर घुसेंगे, ट्वीट मारेंगे। ट्वीट मार के हम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नहीं है। मेरी आवाज़ आएगी सबके लिए सही आ रही होगी। आई गो। Still in a queue. ओ भाई, कौन है भैया? कौन कर रहा है? जानबूझ के कर रहा है जो भी है। देख रहे हो टाइम? देख रहे हो? 2 घंटे अगर मैं ये चला के रखता ना तो क्या हो जाता? 2 घंटे 12 मिनट से हम लोग क्यू में अटके पड़े हैं। वापिस दो। क्या करना है तब तक? BRB डाल दूं क्या?
रात कली मेरे ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ला 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 ना 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 na 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 अबे यार, वाह बेटा, बराबर बराबर। क्या करे बताओ। एक दो, एक से दो पे, दो से चार पे, चार से वापस दो पे, तीन पे, यही चल रहा है भाई। 2 घंटे से यही चल रहा है। और बताओ, फिर भी सिल्वर पर लेके रखी हूँ। मेरे बाद वाले जो है उनका क्या सीन रहेगा देखो। 30 उनका तो भाई मैं सोच के बुरा हाल है, पता है। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से इतना ही क्यों हुआ है, ऑलमोस्ट इतना क्यों हुआ है। सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है कि भाई वो लोग का क्या चल रहा होगा। अरे यहाँ पे लोग बोल देते हैं भाई एनआरपी, हाँ जज जज अपने टाइम के हिसाब से आता है, उसको कोई तो बोलो जाके कि जज अपने टाइम के हिसाब से नहीं आता है। जज ऑफिस खत्म करके आता है। और ये भाई अर्नब भाई साहब वहां पे बोल रहे हो कि जज जज को चेंज करने के पिटीशन डालो। हाँ अर्नब, कर दो भाई, कर दो, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। चलो भाई आ गए वापस 1 पे। अभी कोई ना कोई आएगा बीच में, लग रहा है मेरे को। बात मुझे वेलकम टू स्ट्रीम। हाँ भाई क्या हाल है? अरे एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया हाल है। 5 सॉरी 1 ये लगा हुआ है। छाबरा गेमिंग, अपन बनेगा न्यू जज। आ जाओ छाबरा सर्वर में आ जाओ यार, आरपी तो खोलो, प्रोग्रेशन तो खोलो, उसके बाद जज बन जाओ। 1 टू गो गाइस, एक और बचा है। अभी कोई अगर बीच में आ गया ना तो लग जाएगी वापस। हाँ भाई, अरे चार्ली आज आ जाओ यार। मैं ये कोर्ट केस वाला आरपी खत्म करके तात्या से आ जाऊंगा, तब तक आ जाओ तुम लोग। प्रोग्रेशन अब नहीं होता है? अच्छा ऐसा है क्या? सही है भाई, ये भी सही है। भाई ये देखो बीच में कोई और एक और घुस गया बंदा। पास्कल कब से कर रहा है स्ट्रीम बाद में? ओ भाई 8 घंटा, 8 घंटे से स्ट्रीम कर रहा है भाई ये बंदा, सही है। व्यूज कितने हो गए इसके? ना 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 ना। क्यों में बैठ के चार्ली/रिपोर्ट स्टाफ मेंबर DCRP। डिस्कॉर्ड पे आरपी करना है क्या? आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, तब तक वीसी पे बैठ जाओ, तब तक वीसी पे बात कर लेते हैं। तब तक अपना क्यू भी खत्म हो जाएगा और बातें भी हो जाएगी। डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। म्यूट नहीं करने वाला मैं स्ट्रीम, आ जाओ डिस्कॉर्ड पे जल्दी। DCRP इज लॉब। हाँ भाई डबल वेलकम। छाबरा जी कैसे हो? छाबरा जी डेफ है, खाना खा रहा है भाई, कोई सीन नहीं है। हाँ भाई क्या सीन है? वहाँ पे ये कर रहे हो तुम डेविल जाके हैं? पिटीशन डाल दो बोल रहे हो।
बैल भाई कहाँ गए? मुझे बताओ, मैं भी नहीं डाल मैं दूंगा। मैं पास्कल को डीएम करके ना ना पास्कल मैं पास्कल को डीएम करके बोल दूंगा कि भाई तुम जो मैं केस कहता हारे हो ना ये बंदे की वजह से हारे हो, ऐसा बोल दूंगा मैं। मैं पास्कल भाई को डीएम करता हूँ, रुको पास्कल भाई को डीएम करता हूँ। ये यहाँ पे जो बैठे ना डिस्कॉर्ड पे, छाबरा जी और डेविल जी, आपकी वजह से वो लोग केस हार जाएंगे। केस डिसमिस हो जाएगा, उनका रेस्टोरेंट निकलेगा। मैं को उनके मैं लाइव पे लिख भी दूंगा, हमें धमकी दे रहा है कि मेरे को कुछ मत बोलो, मैं हरा दूंगा केस। वैसे भी हार पे नहीं कर रहा, आर करूंगा मैं, लेकिन वो तो तुम कर ही रहे हो। आर नहीं मैं करता। अब अच्छा शांति देखो, अब शांति से जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बाकी कुछ नहीं। ये क्या है मतलब फिर? हाँ शांति जिंदगी जी रहा हूँ, मारपीट थोड़ा ना कर रहा हूँ। अच्छा। आर कर देंगे चाबरा, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ आर करेंगे। ये भी सही है। खट्टे अंगूर को बुला लेंगे, फिर आर हो जाएगा। खट्टे अंगूर तुमको जुडिशियल कस्टडी में ले लेगा। खट्टे अंगूर को जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी। छाबरा जी को गोकू से पैसा मिला। गोकू से पैसा क्यों मिलेगा भाई डेविल? गोकू से पैसा मिला। अरे गोकू तो गारंटर था, गारंटर पकड़ो पकड़ो। हाँ गोकू गारंटर है। अच्छा हाँ तो गोकू से पैसा कहाँ से मिलेगा बताओ मेरे को जरा। आता की गारंटी ली थी गोकू अरे तो ने। टाटिया का गारंटी है, टाटिया पैसा नहीं दिया। ना तो उसके लिए छाबरा जी को भी तो आना पड़ेगा ना शहर में। अब तू है तो बोल शहर रहा में, वो अभी आ जाएगा। बट अभी शहर ही नहीं बचा ना वो जहाँ पे पैसा लिया था। नहीं वो कैलिफॉर्म हो गया। वो चार मीटर्स खड़ा कर देगी। नहीं अगर तात्या भी है, गोकू भी है, तो छावड़ा भी है। हाँ ये और पैसा तो है ही है, पैसा कभी खत्म नहीं होता। हाँ। लिक्विड मनी थी, मैंने कौन सा हार्ड कैश दिया था। ये भी सही है। बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवा लो, पुरानी निकल आएगा। हाँ पुराना बैंक अकाउंट कहाँ से निकालोगे, पुराना शहर ही नहीं है मेरे अभी। पास स्क्रीनशॉट है। ये भी सही है। देख रहे हो मैं तो स्क्रीनशॉट, हाँ चलो कर लो भाई, मैं घुस गया अंदर। कर लो भाई, कोर्ट केस कर लो तुम। ओ भाई फाइनली कब से है? एक घंटा हो गया। 2 ये घंटे सबको लिखा है भाई। बाद में, 2 घंटे हो गए। अभी ये एंटर हो, यहाँ पे आगे लिखा है एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। शायद तुम्हारे पे स्ट्रीम लेट चल रही है। मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है मेरे को। चलो मेरी स्ट्रीम डिले नहीं चलती है। हाँ मेरे स्ट्रीम डिले नहीं चलती, मेरे 3-4 स्ट्रीम चल रही होती है एक साथ। अच्छा तो फिर सही है। सारी स्ट्रीम म्यूट पे लगी होती हैं। जोन सी देखनी है, पीसी पे ओपन कर ली, फोन पे वॉइस चला लिया और उधर से मैसेज करते गए। सही है। वॉच टाइम। अरे मैं कहाँ पे हूँ भाई, सबसे पहले तो देखना पड़ता है मैं कहाँ पे हूँ। चलो मैं यहाँ से डेफ हो रहा हूँ, मिलता है। बैंक आई। चलो गाइस क्या हो रहा है? हाँ हेलो हेलो ना, नहीं आ रही, यहाँ पे ही दिखा रही है। इम्पाउंड में चेक करना पड़ेगा एक बार। चलो फाइनली भाई मेरा व्हीकल कहाँ पे है?
सामान रख दिया तूने अंदर नॉर्मली चीजें छोड़ नाइफ वगैरह सब अरे रख दिया? यार सामान रखा ये सब एक मिनट देना गाइस। पीडी 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 कहाँ? रेडिएटर कर रहे हो आजा गाड़ी किधर गई भाई मेरी? क्या लग रहा है क्या होगा आज केस का? वैसे केस क्या है मेरे को भी लिखने दो यार। किसका है? पॉल शेल्बी ना? कौन 50 है? बंदा नाम बता एमडी नंबर कुछ ज़्यादा है क्या? 527 है। किधर है भाई पीडी? किधर है पीडी? एस्कॉर्ट क्यों नहीं कर रही है? Neither it's responding. कोई तो रोज था बे, पूरा नाम नहीं पता। रोज तू बोला था मुझे। एमिली। हाँ एमिली इधर है। लीजन पे छोड़ दो नहीं तो if everyone is busy. You busy too? नहीं ठीक। कहीं जाना है आपको? Court house. There is a hearing right now. Where is Officer Shubham by the way? क्या बोल रहे हो? Officer Shubham कहाँ पे है? वो तो ऑफ ड्यूटी चला गया। अरे भाई केस का हियरिंग कैसे होगा फिर? वही तो। क्या ही बोले यार, वो तो बोल रहा था कि 11 बजे तक बता। है वो। अभी तो था वो चला गया। ठीक never mind. डिसमिस कर दो सर, बता रहा हूँ। वो लोग आए हैं क्या जिनका है अगेंस्ट में? यप अभी लीव ऑफ एब्सेंस भी ग्रांट नहीं होगा क्यों? बिकॉज पीडी के पास लॉयर है नहीं। पीडी का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा? अभी तो कोई अवेलेबल ही नहीं। हाई कमांड कौन है? अभी हम्म मैं जिलन। ओके कोई सिचुएशन चल रहा है अभी? हाँ उनका सिचुएशन चल रहा है। मैं थोड़ा वो लॉयर कोशिश कर रहा था तो मैं पीडी पे। अच्छा क्या सिचुएशन है? आई थिंक ज्वेलरी और एक साहब, एटी कहाँ है। हो? लीजेंड स्क्वायर पे हूँ। आ रहा हूँ कोर्ट हाउस।
आपको पिकअप चाहिए? नहीं, पीडी की गाड़ी में हूँ। अच्छा ठीक है, आप आओ। ठीक 5 मिनट में पहुँचता हूँ। मंजलिको का सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे, कितने ऑफिसर्स है टोटल? अभी वहाँ है, वहाँ मोस्टली 1 2 3 वेंजलिको पे अब तक 2 ही रिस्पॉन्ड किया है, अच्छा, तो ये ऑफिसर जिलन और कहाँ पे बाकी है? लोग 80 में है। वो आई थिंक 80 में है। ठीक है, एक काम करो, उसको बोलो जितनी जल्दी पॉसिबल है आ जाए। पीडी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी को। वेट करो, तो मैंने फ़ोन किया था, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। रुको एक फिर से कर। ऑलरेडी बता दिया था शुभम हेलो, ऑफ ड्यूटी क्यों गया पता नहीं। तुम्हें जज ने बुलाया है कोर्ट, जल्दी आओ। सर वो बोल रहा है सिचुएशन में हो, क्या बोलूं? बाकी ऑफिसर्स नहीं हैंडल कर सकते क्या सिचुएशन? बाकी ऑफिसर्स नहीं हैंडल कर सकते? बोल रहा है यूनिट कम है। ठीक है, उसको बोलो जल्दी खत्म करो और आ जाए। जल्दी खत्म करके आओ। सर बताओ, क्या ही बोल। क्या हुआ? बोल रहा है कि चलो चलो चलो। यूनिट्स कम है, हम्म तो इसलिए मैंने उसको बोला आज जाना। ठीक, नो वरीज। आर यू कमिंग? यस। ठीक, आ जाओ। माय अपोलॉजीज टू एवरीवन। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लंबी कतार थी, 2 घंटा वेट हेलो। किया मैंने। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, शेरलॉक है ड्यूटी पे? Anyway, guys, wait for a while, then you can join the courtroom. हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है, बस जीत गया केस। कट। बात ये है, वो उंगल करता है भाई फालतू। जज साहब के मारते हैं। जज साहब कैसे हैं? जज साहब बढ़िया बढ़िया। मेरे को एक और रिगार्डिंग बात करनी थी मेरे वेपनेशन से। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट लेना। क्योंकि मुझे गोली पड़ चुकी है कल। क्यों? पता नहीं, मैं जेम्स टाउन के आसपास घूम रहा था, 3-4 बंदे आए, गन निकाली, मारने लगे। ठीक है, केस के बाद बात करते हैं। जरूर से। और इनकी तरफ से और कौन है? No idea as of now. No one has appeared. So they are depending on their own. Let's see. Let me just put the board on the put the notice over here. Sure. क्या? Carry on, नहीं। सुनो, तो फिर जीत गए फिर। जो पार्टी नहीं होती है वो डिसमिस हो जाता है उसकी तरफ का। मजा आया, मजा। जीत गए मतलब कोर्ट के ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। बिना लड़े, जीत गए। बस बस। जैसा आप देख, जैसा आप देख, जैसा आप देख, रुक जाओ। जो आई विटनेस फीस बाद में देंगे, तो ये जैसा आपको देखने को फीस होती है किसकी भी? वो बनाए हुए मुझे नहीं पता।
लोगों के साथ ही हो। बस इतना मनाओ आए ना वो। कायीन है वो कायीन। तो है ही। कायीन और उस केस में था अगर उन तीनों में से कोई नहीं होगा तो फिर मिकी जीता जीता है। अरे डिस्ट्रिक्ट करवाओ, वो डिस्ट्रिक्ट करवाओ 911 और ये 3 करा दिया। करा दिया ना, ठीक है। शर्लॉक रॉजर्स, रोमियो और क्रूज, शुभम सिंह, इनमें से कोई भी नहीं है? रमीरो नहीं है, शेरलॉक भी नहीं है, अच्छा नहीं आ शुभम सकते? भी हाँ नहीं है। ठीक है। ठीक है। नाउ पीडी हाई कमांड विल रिप्रेजेंट। मैंने केस स्टडी नहीं किया है। ऑफिसर जिलन, राइट? ही इज हाई कमांड राइट नाउ, राइट? चिलन, हाँ यस। हाँ। और एनीवे I guess from last 2 to 3 days the case has been is being postponed. हम्म। So now we have to conduct at least first hearing on this. So Okay. ask PD representative to come and present their side on the case. What if we don't come? Case will be dismissed and the charged जितने भी लोग हैं। हेलो, I would suggest to तुम्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पीडी की तरफ से, और there अगर are नहीं no आओगे तो witness केस डिसमिस हो जाएगा। there's no witnesses regarding the case. How can we know that like from the PD perspective they were not there? No worries, हाँ तो फिर it's their job. ऑफिसर्स जो भी थे It's their job. सिचुएशन में उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, जो भी केस वाले थे। So शेरलॉक, शुभम और रमीरो, 3 लोग का है केस। शुभम गया ऑफ ड्यूटी, शेरलॉक नहीं है और रमीरो भी नहीं है, तीनों नहीं। it applies for us that if one of our witness or victim is नहीं, अब not तू there, ऐसे then बोल ही नहीं सकते ना, it should ऐसे थोड़ी apply बोलूंगा on तू them उनको। too. Just sir. एक मिनट रुक जाओ, ये इनकी Yeah, बात sir. खत्म हो गई। एक काम करो, आप फोन करो उनको, मैं नंबर देता हूँ। बोल रहा है कि सस्पेक्ट है साथ में, मैं नहीं आ रहा। बताओ नंबर। Because she has been 31191 waiting for around क्या? 1 hour or more. 31191। 311 911। Almost 10. That's why. She has been waiting for more than 1 हेलो, hour or more. सर सिचुएशन में हूँ सर, बहुत लंबी सिचुएशन चल रहा है, मैं फोन करता हूँ आपको। दिस इज जज वेजिटसन calling on you. हाँ सर, मैं सिचुएशन पे उतरा, सस्पेक्ट पकड़ रहा हूँ सर। You will need to represent if other officers can't. I really don't care because if the hostage has been saved, now your priority is to represent yourself in the court. It's your got call. it, but You'll have to face the currently in a consequences. Don't worry. Currently in a situation, sir. ठीक. And also I was not in this case. No But I worries. will try. But the concerned officers are not available. How much time you will take? Sir, we I'm just don't have time. give me 2 minutes. Sorry Let to me say confirm for the it's that a policy how many document, times we it will don't take have me. time. She has Okay. to Call me back on same number. Okay, sir. So Yeah, she do not have much time. She has to go. That's why. Yeah, no worries. I can understand, but we have to check the police officer's availability as well. But you are aware that, right? Shubham was on duty. Have you discussed with them? No, she was not. He hasn't. Have you discussed with them? Because you emailed me that all the required persons available inside the city. No, Shubham was not available. I think so. You said hello. Yes. No, I haven't So said that. officers Shubham down हो गया, was मैं not नहीं आ available. सकता, सॉरी, Have I? कोडेड चल रहा है। No worries. For कोडेड हो some गया time सर, ठीक है, Yeah, मैं no issues, बता no दिया issues. इसलिए। No ओके issues, ओके। no issues. Oh, you too. Yep. I was not. See, the thing is, you emailed me, right? Shubham is in city with you.
Yeah, no, Yeah. what? Not with me. I was knowing that Shubham was there, but he was not Okay. with me. So have you tried to contact him? No, I haven't tried to contact Okay. him. By what time? By what time he was inside this, in city? Got to like 9:30 or 9:30 तक था, फिर पता नहीं कहाँ गया. Like it might be due to the warehouse port case he just run off duty or something. I don't know. Never know. Okay. Do you have his contact number? Do you have his phone number? Hmm? Do you have his phone number? Let me He see. went off duty at 9:25. 9:25, right? So that means I have already announced that this case will be the case hearing will be taken place by 9 o'clock, and he hasn't responded me by any point of time that he has to go some he might be having some other priority work. He hasn't informed me. Okay, do one thing. Come to courthouse. Let's start. Okay. Yeah. Officer Mickey. Come. John Radio So, 44. okay. Radio 44. Radio check. Check. Am I audible? Yep. Yeah. So, Mr. Lawyer, explain your first introduce yourself and explain what's the case. Good evening, sir. This is Jagnaran Kumar Tripathi, representing the case of Paul Shelby, Are you and the defending or prosecutor for this prosecuting? case. Yeah, I'm prosecuting this case from my side, and can I know who is defending from the PD side? I'm not able to see anyone as of now. You can tell me the details of case. Okay, so on 1st of April, my client, 31st of March, my client was arrested for false allegations, and I'm just putting the PD has maliciously prosecuted my clients Neha Arora and Paul Shelby for that case. We have no such evidence for that. I will be. This is my opening statement for now. We'll be proceeding. We'll be saying all these stuffs in the proceeding. Okay. Officer Mickey. Yes. Are you looking into the database right now? Are you gonna represent? I'm not sure. I'm just trying to study the case. Okay, no worries. How much time you'll need? 20 minutes. 10 for you can actually I'll give you 5 minutes, 5 to 10 minutes. If you can study, then we'll continue with your reference. Will that be fine with the prosecution lawyer? Sorry, sir, I was not able to hear you. Can you say it again, sir? Okay, Officer Mickey is currently studying the case, and probably he will be representing MRPD. He'll be needing 10 to 20 minutes to study that. I have given him 5 to 10 minutes. Will be okay with you? You can discuss Okay, with it your will be clients as okay well. with me, but my clients Neha Arora has to go. Yeah, that's what I'm saying. To the You can discuss with your clients. Oh, okay, sir. क्या सीन है सर बताओ Uh, क्या if I'm not wrong, the incident ID is 527.
Yes, correct. 527. मैं बात कर रहा हूँ जज साहब या बोलिए बोलिए. मैं प्राइवेटी कह रहा हूँ कि 13 दिन से ज्यादा हो चुके हैं मेरी I तबीयत know, खराब I है। know, I know. That's why I'm forcing this to take place on the same day. If they take time, then I It's think I just will. 5 to 10 minutes. They have been already, you guys have waited for more than 1 hour. So I think 5 to 10 minutes should be enough, right? The 13 दिन रुके हैं, so if he can prove he can be free, your client can be free, you can actually wait for more Like, time. if no one comes except Mickey, can this case be dismissed? We'll have to see. Let's see. Okay, that's why the JM was coming. JM was coming here Yeah. for So defending it. yeah. Right? So let's see. Which makes no sense that some See, other. the officer, he is also in high command, right? Are you aware of that? But they were not present on the situation at that point of time. If they study the So case, even the Jillian is not also present at the same time. so I would request you to See, dismiss the case. the We can PD. know some officers. There must not be 3 officers only present at the situation, right? I'll tell There must you, be more. at least PD officers needs to be there, right? For hearing for both side. अगर यहाँ पे PD officer भी नहीं होता, I could have dismissed the case directly. Gentlemen, go to your stand, please. I could have dismissed the case immediately if the single officer is also not present at the situation. I mean, on the court. ठीक है. So now they have their representative, and Mickey is ready to represent MRPD. Okay. So how much time is 5 to 10 minutes. I'll be also looking at the case and overview documents. So for 5 minutes over, can I ask him to come Yeah, and address him? give me a minute. Mickey, are you ready to defend the case? Yeah, give me a second. Mickey, you ready to defend the case? Yeah, give me a second. What time? हाँ नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंट तो करने दो. The neighbor thing is this, case should be over by today because thing is that कॉल आता है, he was like भाई आज नहीं आया तो डाल दूंगा जेल में, डाल दूंगा, डिसमिस हो जाएगी केस, जेल में डाल दूंगा. Okay, so he said that. You must be having your recording, right? नहीं recording on me. किसी भी Who तरीके said? से नहीं बस Who said? शुभम सर का फोन आया था. ही सेड कि आज कोर्ट केस है, तुम आ रहे हो ना? मैंने कहा हाँ सर हमारे साइड से रेडी है. बोला अगर आज नहीं आया ना तो डिसमिस हो जाएगा, जेल में डाल दूंगा अभी आके. अभी 1 घंटे पहले बात हुई शुभम सर से. अगर आपको फोन आया था तो he should have been here, right? गिव यू माय कॉल लॉग, वो मैं दे सकता हूं आपको सर. हाँ ठीक है. कॉल लॉग जो है आपके इनको देना. ठीक है. कॉलॉग्स का मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना कितने टाइम पे आया था, तो उनका ऑन ड्यूटी ऑक्स भी चेक हो जाएगा. Submit it against the case. ठीक है सर. Yeah. I am allowing this the last moment of evidence. Yes sir. Yeah. Mr. Jagnarayan. Yes. Till Officer Mickey resumes, can you explain what are the evidences you have at your point that proves these your clients are not guilty? Drum gun, please. Ex parte. So sir, Yes. on 31, I'm just starting from the beginning, from the initiation, from on the 31st of Eve. My client at around 10 p.m. he got a taco delivery job at Kingstone. He has gone there, of which witness is Michael Vespucci present over here. So he gone over there and he was just delivering tacos, and at a like, crossway
met with there was a blue bike who PD was chasing. So in a confusion, PD chased them without a siren and lights, and they were not were not known that they were being chased at a certain point of time. They had just got pitted by the PD, and they just fall into the construction site and got their bike got stopped, and they were heavily injured because Sherlock rammed over them, of which reports are with me. Okay, where are the reports, and where is the advance notice of your evidences and So the reports was given by Dr. Zad Malik to the PD, I think so, because he was not ready to submit it to me. I don't know why. Okay, I'm not able to see any medical evidences on MDT. So yeah, there were no medical evidences in the MDT because the PD hasn't attached it yet. Okay, no worries. Now, tell me one thing. You have submitted. You have submitted bench trial request, right? Yes, sir. Give me a minute. Yeah, sorry. Sorry, yeah. So आपने जो बेंच ट्रायल रिक्वेस्ट का फॉर्म जो सबमिट किया है उसमें आपने एक लिंक अटैच किया है मैं नो व्हाट्स द लिंक इज दैट फॉर व्हाट लिंक इज दैट regarding आपने एक इंसिडेंट नंबर 527 के साथ एक लिंक ऐड किया राइट द कोर्ट हियर yeah, बाय रिक्वेस्ट it was regarding the MDT. Okay, so can you tell me where is your advance notice? Sir, I haven't given any advance notice because I asked Dr. Zad Malik to be in court, but he denied to be in court. He has given me his statement, and he denied me to give that reports for my clients. Okay, I'm telling you this, and this will be noted in the verdict as well. अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉयर या फिर डिफेंडिंग लॉयर अगर एडवांस नोटिस नहीं देता है द विटनेस क्रेडिबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड ठीक है बिकॉज आपने माइकल वेस्पुची का जो विटनेस है उसका एडवांस नोटिस नहीं दिया था आपने डॉक्टर जायद का भी एडवांस विटनेस का नोटिस नहीं दिया था माइकल वेस्पुची का सर नोटिस दिया गया सॉरी सर कहाँ पे दिया है That's what सर I'm उसमें asking. विटनेसेस में दिया गया है दैट पॉल शेल्बी स्नेयर हो रहा है एंड माइकल वेस्पुची आई थिंक सो नहीं दिख रहा है See, I'm just seeing two names, Paul Selby and Sneha Arora. I'm not able to see Michael Vespucci on there. Okay, sir, I will be adding it up. Sorry, what did you say? I will be adding it up. Sorry for that. My apologies for that. No worries. I'll be recording Michael Vespucci's statement in a few minutes, and afterwards, this kind of mistake shall not be happen in my court. Okay. You'll have to follow each and every procedure. The next thing, you haven't given any evidences advance notice for that as well, because you haven't submitted any evidences with. Sir, there are no evidences yet, but reports have been made yesterday only because Dr. Zav Malik hasn't made a report earlier. Okay. So wasn't it your duty to call Mr. Zaid Malik in the court for his witness? He denied to come in the court, but he has given me the written statement for the same. He can't come at the time of the court hearings. Okay. ठीक.
And doctors, I asked some doctors to give prescription of the injuries, so they denied that. Their high commands have told them not to come in the court to give this witness as a witness. Okay, do you have this thing in written? No, sir, I don't have it written, but I asked Dr. Lincoln right now, around 15 minutes ago, but he denied it. Okay, no worries. So do one thing. Make a report of this, submit it to me. I'll take action against doctors as well as PD officers who hasn't submitted their evidences and what should have been submitted. So regarding the reports, PD officers must have submitted the reports and attached it to the MDT. It's there. It's fully there. उनकी गलती है ये पूरी कि उन्होंने नहीं किया है क्योंकि See, as of now, I'm able to see, as per the evidences, I'm able to see two guys are injured in the photograph in MDT, and I'm still not able to see the medical reports on it. Sir, it's Dr. Zat Malik fault that he hasn't made the reports, and for the PD2, they haven't asked for the reports. I asked for the report, but Dr. Zat Malik denied to give me reports as he said he will give it to PD directly. I don't know why. See, no worries. Officer Mickey, you done? Yeah. Are you willing to represent MRPD? Yeah. Go ahead, your opening statement, please. Okay, so I will like to ask Sneha Arora and Sir, opening statement. Objection, sir. Objection, Judge, sir. Opening See, statement was I incorrect. would request everyone to police officers are here to represent themselves. These guys are not used to with the court procedure, but still I'll allow him once to represent MRPD as there is no lawyer from PD side. So I Officer would Mickey, request to call Sneha Arora in the witness box for that. Officer Mickey, with respect of court, you'll have to follow all the procedures. You have to give the opening statement first. What do you think of this case? After that, you can go ahead for the questions. You can cross question the witness from opposition lawyer, and if you can present evidences and witnesses. On that basis, opposition will cross question. After that, I'll be you both will have to give the closing statement जिसमें आप बताओगे कि मुझे किस किस साइड पे मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जो क्लाइंट है या फिर आपका जो ऑफिसर है उसको आप बचा रहे हो या फिर बचाना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है, ये आप क्लोजिंग स्टेटमेंट में दोगे. एंड आफ्टर दैट आई विल गिव माय डिसीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. इट्स अ सिंपल प्रोसीजर. And at any point of time, if you think the opposition lawyer is saying something wrong, you can object on him with a good manner. yeah, sir. Call the witnesses. Now, first I will give my opening. Yeah, good. So, sir, I think that the charges which are put are actually legit because we have the reports, we have the dispatch calls, and it may not be coincidence that they are present there at the same time. As you can see, the related evidences are also attached. Can I call Dr. Officer Mickey in the for cross questioning that? Before that, Officer Mickey has requested for witness. So do you want Sneha Arora to come in the witness box? Yeah, sure. Sneha Arora, please go in the witness box, please. This side, ma'am. That's it.
Yeah, so Miss Yeah, Neha Arora, can I? wait for a while. You have to take oath. Everything is you're gonna say will be and will be truth. Yes. Okay, you can proceed. भाई ये लॉयर को लेनी पड़ती है. Okay, so Sneha Arora, may I know what you were doing at that scene, at that crime scene? मैं टाको डिलीवरी कर रही थी विद पॉल शेल्बी. Same house from where we got the robbery? नो हम जेम्स टाउन पे थे. जेम्स टाउन के अंदर हमारा टाको डिलीवरी का आया था, तो मैं एंड पॉल शेल्बी हम दोनों टाको डिलीवरी कर रहे थे उधर. I'm from where you sat on the bike and tried to flee, and the bike where it was parked. We got the call from the same house. Also, I have the dispatch call evidences. Objection, my lord. He's misleading the client. On what basis? The bike was not theirs. He has uploaded the evidence. No, there's no such evidence that bike was theirs. See, the number plate can't be seen. Just the color can't be seen, and on the basis of color, no one can define the owner of the bike. It's too dark in that shadow that even bike can't be seen properly. Which model is it? I guess it's a radar plate reading, right? It is But clearly sir, mentioned. no, sir. The photo has been taken from too much far away, and that on the place where the plate has been read, it was construction site where they were injured. Okay. Now tell me one thing. So you're trying to say कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ये लोग इंजोर हुए, देन जो बाइक है वहाँ पे उनका प्लेट लॉक हुआ, फिर आके इन्होंने जो बाइक देखी उसके बेसिस पे मतलब वो बाइक का फोटो डाला और फिर रडार पे उसका फोटो आया. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? Yep, sir. The thing is, दो बाइक वहाँ खड़ी हुई थी, एक सैंचेस एंड एक ब्यूकर बाइक which is not mentioned कि कौन सी बाइक है, अच्छे से दिख नहीं रही है चीज. दोनों बाइक में से एक भी बाइक मेरी क्लाइंट की नहीं थी. ये लोग जेम्स टाउन पे थे. एक क्रॉस सेक्शन आया था जहां इनके विजुअल्स लॉस्ट हुए और इन्होंने मेरे क्लाइंट को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इनके साइड लाइट्स और सायरन ऑन नहीं थे मेरे क्लाइंट के हिसाब से. और इन्होंने जैसे ही ये उनको पकड़ नहीं पा रहे थे तो इन्होंने उनको पीछे से पिट किया और मेरे क्लाइंट जाके गिर गए और सामने पेड़ से जाके ठोके, जिस पे शौर्योक ने इनके ऊपर बाइक चढ़ा दी थी, जिसके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरे हिसाब से पीडी को मांगने चाहिए. No worries. Mickey, continue your questions. Skip that question. You can ask Your next Honor, question. you can, as you can see, the number plate which is mentioned there. The bike is registered on name of Paul Shell. Objection, my lord. The bike is For what? on for the bike on the scene where the number plate is red is not the scene of the crime. You can see that. So where is the scene of crime? The scene of crime is the place where the robbery was done, according to them. Objection, Your Honor. Go ahead. Mr. Tripathi already said that the bike is not of his client, but the bike is registered on name of Paul Shell. But does it prove that it was the same bike on at the house? Can you tell me how will you prove that the bike is on name of any civilian? Jagnarayan Sir, ji. you asking? Sir, as you can see on the evidence See, that I can understand the picture is not clear, right? That's what you're trying to say. I can understand. yes, sir. But the radar, which has which has which has captured the bike, that can't lie, right? But sir, the radar photo is at the place where they got injured. That is the thing I am saying. It is not at the place where Okay. Have you went they. through all the evidences? Yep, sir. I went through all the evidences. That So is why can you I'm saying. check on-scene evidence photo first?
So if you can see, there is a bike parked and the radar photo is over there. Okay. So I'm just speculating right now. I'm not going to any conclusion. But the bike was there, right? It might not be the same bike, sir. Okay, I can consider that as a hypothesis. But police vehicle has. I can see but two police, bikes over there. But police has captured the radar of the plate of bike, right? So that means these guys were present near the crime scene, right? The thing is, there are two bikes, sir. One is Sanchez and one is that other bike which is not clearly seen. With किस bike का number plate है ये मेरे को बताएंगे? I can tell. Okay, no worries. Evidence are pretty much clear for the bike. We can proceed further. Mickey, go with your questions. I don't have any questions for Sneha. Okay, you can cross question again, Mr. Jagnarayan. So स्नेहा जी मेरे को ये बताइए आपको आप जब वहां से निकली तो टाइम क्या हो रहा था? अगर आप जहाँ टाको से निकली तो टाइम क्या हो रहा था? टाइम हाँ मैम. 8 बजे थे. ओके सो इट वाज 8 एंड या सो आपने जब वो जगह छोड़ी तो 8 बजा था और आप उस जगह पहुंची तो कितना टाइम हुआ था? उसके लाइक 5 मिनट 8 5 8 10. Okay, so it was 8:10. And what was the time? Can I ask me something? What was the time you got the report of that house robbery? Sir Mickey. Nice. Yeah, yes. Can I know what was the time you got the report of the house robbery? Time has not been updated. No, that there's no, it's not mentioned. Okay, And why is noted. okay? So you can see they have not noted the time that the. No issues. We can proceed further. So आप मुझे बताइए वहाँ जो बाइक खड़ी थी वो आपकी थी? कहाँ पे? वहाँ पे जो बाइक खड़ी थी वो आपकी थी? वहाँ पे be नहीं. more specific with the location because we are referring here two locations. One is a crime scene Yeah, and वह- one with a injured one. कॉवेनेंट एफ पे जो बाइक खड़ी थी वो आपकी थी? नहीं, वो नहीं थी. सो वहाँ मैं देख सकता हूँ दो बाइक खड़ी थी. आपने किसी सैंचेस को देखा था इंटरसेक्शन पे जाते हुए? सैंचेस को यस किसी यस. हाँ देखा सो था. आपने एक ब्लू बाइक को भी देखा था जाते हुए? हाँ. तो ऑफिसर्स किसके पीछे जा रहे थे? मेरे को ये बताइए आप कि ऑफिसर्स किसके पीछे जा रहे थे, सैंचेस के पीछे या फिर ब्लू बाइक के पीछे? वो ब्लू बाइक के पीछे जा रहे थे. तो Blue बाइक के bike पीछे जा belongs to रहे थे. Paul Shelby, right? No, it doesn't belongs to Paul Shelby, sir. It Seems belongs like to it. Paul Shelby. Officer Mickey, do you have Caesar report on this? I'll have to check, sir. Yeah, go ahead and check. Check once an MDT. I can't see that because it's blurred. According to me, the radar is blurred too much. I can't see even the words written over there. Can you tell me the evidence number, Mr. Tripathi? 1946. We are talking about blue bike, right? So, Your Honor, I would like to say. Yeah, go ahead. So we can see there are two bikes. One is blue and one is Sanchez. Yeah, Sanchez is yellow one, right?
So is there any difficulty with your radar that it hasn't read the number plate of Sanchez? Like there are two So I bikes will like to stand over there. say that we have the photo of the bike in which Officer Shubham is क्यों running bully the कर रहा है? नहीं plate, bully कर so रहा मैं. we can clearly see that the bike is of Paul Shelby, and it may not be the coincidence that same bike where the chase ends is of Paul Shelby and the bike there is the blue one. I think it's the same, You think and it's the there's nothing same? blur. So There's nothing blur, Mr. Tripathi. the place where you are saying you got that. So the place where you got that evidence, you must have the place where you got that जहाँ आपने ये खींची थी फोटो, ये वो कंस्ट्रक्शन साइट थी, राइट? आपने उस जगह चेक किया था कि वहां आपने चेक किया जाके, वहां आपने क्यों नहीं चेक किया जाके कि बाइक किसकी थी? See, I'll tell you. Mr. Tripathi, I was not at the scene. I am just reporting, I'll representing. tell you, Mr. Tripathi. I'll tell you. The thing is, पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? That I will decide. You will just have to prove them wrong for your client. ठीक है? So if Yeah. So if I assume that the bike was theirs, can you tell me on which? He's gone. no worries, you can proceed with the argument. Okay, so can you tell me which bike was theirs? Cause कि जिस पे रॉबर्ट्स भागे थे, दो बाइक वहां खड़ी दिख रही हैं. See, according to the evidence, what I'm able to see, there is one blue bike involved, there is one orange bike involved. Orange one is a Sanchez, orange or yellow, whatever it may be, and the blue bike. As far as I understand, the blue bike belongs to Mr. Paul Shelby. Am I correct? Okay, sir, I admit that it belongs to Paul Shelby. They might have got that taco delivery at there too. They might be changing over there. Okay, I need to understand what is this taco? Can someone tell me? Sir, okay, sir, I will be explaining it to you. It's a taco. It's a eatable thing that is made at a taco shop, so that पीढ़ी के साइड से तो कोई तो होना चाहिए. the person over there gives delivery to, so that delivery job, so that you can deliver taco, so that they can range their thirst of the civilians. Okay, is it a government job? No, sir, it's not a government job. Okay, do you get any ID cards or job ID for this? According to me, we don't get any job IDs for that. Okay, so how will you identify the person is doing a taco job? Like the person over there gives that ID card, that job to the person, and we can clearly see in the evidence that they were having some tacos in their pockets. In the evidence, let me see which, let me clarify which was the evidence. Okay. Evidence number 1955 and 1956. And I have an evidence as a witness, as a raw evidence. I have Michael Vespucci to represent Paul Shelby and Sneha. Okay, let me understand who is accused in this case. I'm still not able to understand who is accused. Sneha Arora and Paul Shelby. I would like to mention. And you have mentioned witness name Paul Shelby and Sneha Arora. Is that right? Yep, sir. So are these guys witness and who is accused? Like these guys are the witness and two accused too, cause there are no evidences, other evidences regarding that. I have to add Michael Vespucci's name too, but on a prior notice, I have Okay, given. can you tell me difference between accused and witness?
Like one who has faced the misery is the accused, and witness is the one who has seen the incident. Correct. So, can I know why there are names of Paul Shelby and Sneha Arora in the witness? First, sir, there are no one to describe their incident. So, Only evidence. how did you got Michael Vespucci? Like, Okay. yeah. Do one thing. Proceed with the witness with Michael Vespucci. Okay, sir. I want to ask Sneha Arora some questions too. Yeah, go ahead. So स्नेहा अरोरा, आप बताइए कि जब आप वहां पहुंची, जब आप गिरी वहां, तो आपको पुलिस ने पिट मारी थी पीछे से बाइक पे? या पिट मारी थी पीछे से, पैर पे Does चढ़ाई थी। Sherlock rammed over you? यस। Okay, so you got down due to that. हाँ। Point to be noted, my lord. They have rammed them, due to which severe injuries have been done to them, of which reports would be submitted by the PD. Okay, स्नेहा अरोरा, आप जा सकती हैं। Okay. Can I ask Mr. Michael Vespucci to come in the witness box? Give me a minute. Okay, sir. What was the doctor's name you told me earlier? Sir, he was Zad Mayek. And I asked Dr. Inkan to come in the court, but he denied it. I don't know why. See, okay. You can call Michael Vespucci. Michael Vespucci, can you come in the witness box? ओके माइकल पूछिए, आप मेरे को बताइए 8 बजे आप टाको पे क्या कर रहे थे? Sir, that time I'm like my ingredients like taco pe to make some tacos. Okay, Okay, तो firstly introduce yourself. What do you do in city and what's your job? My name is Michael Vespucci. I am currently part-time as a trucker and part-time as a taco delivery person, and I also like do side jobs whenever possible. Okay. Sir, can I proceed? Yeah, proceed. So माइकल पूछिए, आपने वहाँ किसको किसको देखा? There were actually a couple of people out there, but since I know who Paul and Sneha, I saw them, and I saw like around one person more, I think. तो उन्होंने ऐसा कुछ लफ्ज जाहिर किया था कि वो जेम्स टाउन जा रहे हैं, उसके बाद कैंटन एव जाएंगे डिलीवरी करने के लिए? Candidly, I don't know. जेम्स टाउन के बारे में बोला था because जब भी हम डिलीवरी करते हैं, we generally like after making tacos हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि किधर आया डिलीवरी, because if it's the same location we go together. So he had told me that he was going to Jamestown to as his first delivery. Okay. तो Yeah. Sorry to cut you here. Can you tell me, Mr. Michael Vespucci, आप जब taco delivery करते हो, so Yes, sir. have you got orders from your email or phone? What exactly it is? We generally we get orders from the person, like there's a person standing at the taco delivery bench that takes orders, and she, after we make our own tacos, she analyzes the tacos if they are proper quality, and as soon as that is done, she tells us locations that where they have got orders from. So we neither get it on our phone, we neither get it on our email or anything. We just get a notification from them telling us that this is the place, this is the house number, you have to go and deliver. Okay, so I would like to understand more on the process. Yes, sir. When you actually get, I'm going into details right now. So, Sure, sir. for example, you have to tell, you have
prepared 4 tacos, right? That's Yes, what sir. I'm trying to say. 4 tacos. So at each and every place you'll be placing. I mean, you'll be delivering 1 taco, right? I mean, generally that is the scenario because I've generally the tacos are quite filling, so I don't see anyone ordering more than one. So it's generally people order 1 taco for themselves, and then I come back to the taco stall and see if there are any other deliveries available. If there are any other people who have ordered tacos that I can go and deliver to. Okay, so that means if you have more, if you have prepared more than 1 taco as well, but you'll have to get back to taco shop and you'll have to check for the availability of delivery. Yes, there is always availability of delivery. At least I've never faced a situation where there has not been availability of delivery. But yeah, you have to, after every delivery, you have to go back to the shop to get another delivery. Okay, that clears my point. Continue the question. Okay, so आप ये बताइए इनका कुछ फोन आया था बीच में कि हम अभी कैंटन ए पे हैं, हमने डिलीवरी कर दी है, हमारा ऐसा कुछ डिलीवरी आया था कि हम चिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ बैक साइड पे ऐसा कुछ फोन आया था? No, not really. Okay. So that is it from my side. And how much does it takes to do one delivery, sir? One delivery depends on the location. अगर like मुझे कभी I've got location maybe EDM, तो उसका travel time थोड़ा ज़्यादा होता है. But depends on the location where you're delivering to, the time limit of actually going there, delivering the taco and coming back. Okay, so can like in approximate time, 5 minutes, 10 minutes or something? It should take that much time ideally. Like Okay. So 5 minutes per delivery, right? approximately, yes, sir. Okay, point to be noted, sir. It takes 5 minutes to be like for one delivery. ठीक है. Okay. Okay, let Officer Mickey come. Meanwhile, you can stay in stands. Okay. Sir, can we get a break for some time so that I can talk to my clients for a minute? Yeah, sure, you can. Okay. We'll be having a break of 5 minutes. Can I step down from the stand, sir? Sorry? Can I step down from the stand in the break? Yeah, sure. Okay, thank you. हाँ भाई. दूसरे रूम में पीछे आ जाओ. भाई पीडी की तरफ से लॉयर चाहिए भाई, ऑब्वियसली पीडी की तरफ से लॉयर चाहिए. मिकी जब तक आता है. सनी, थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कैनेडियन डॉलर. Thank you so much. Does Vegeta-san accept bribe? No. Vegeta-san bribe नहीं accept करता. Thank you so much for $2 Canadian, bro. टोनी है, टोनी नहीं है ना, टोनी एलोए पे गया है, पता नहीं यार कब तक आएगा टोनी, देखते हैं, लेट्स सी. एक मिनट देना गाइस, मैं बीआरबी डाल रहा हूँ, बीआरबी डाल के भी आता हूँ मैं, ठीक है. 2 मिनट देना, कोर्ट विल रिज्यूम.
Yes, we're back, guys. ये देखो भाई. हमको मत सिखाओ, ठीक है, क्या करना है। हम देखते एक हैं मिनट ना, देना तुम गाइस, अपना पानी पी के देखो, आता अपना हूँ. देख। कौन सा चीज? हाँ, ऑन सीन एविडेंस वो प्लेट का नहीं दिखा रहा है, वो गाड़ी दिखा रहा है, प्लेट नहीं दिखा रहा है वहाँ पे। ऑन सीन एविडेंस का ऑफिसर का पर्सपेक्टिव है कि वो दिखा रहा है, वो बाइक दिखा रहा है डूड, वो प्लेट नहीं दिखाना चाह रहा है वहाँ पे। अब वो प्लेट तुमको दिख रहा है, उतने एरिया में वो चीज दिख रही है तो तुम उसको पॉइंट कर रहे हो, बट वो दिखाना नहीं चाह रहा है वो चीज। अब भाई वैसे तो हर चीज बहुत कुछ दिख रहा है वहाँ पे, वैसे तो हर चीज पॉइंट करोगे तुम, नीचे का वो दिख रहा है, पानी दिख रहा है, खाना दिख रहा है, सब देखो। हाँ, तो तुम प्रूव करवा दो ना बाइक उनकी नहीं है, खत्म। इजी कहा, अभी तो चालू, रुको। आओ ना, लेते तुम्हें। Yes, we are back, guys. Yep, आ गया. आ जाइए सर, आ जाओ पॉल, माइकल। Court will resume. Yes, Officer Mickey. मैं बोलना भूल गया, आरी गोल्ड मेरा कैरेक्टर. Yes, I know. Yes, Officer Mickey, you can cross-question Mr. Michael Vespucci. May I know how Michael Vespucci is related to this? As I can't see his name in the report. Advanced notice will be given as soon as possible. So, he was at the place at the taco shop where the people got the delivery of this taco. Judge, I have allowed him, I have allowed him for a witness. we had one case before this, and Salman Khurshid sir already said that this will not be admissible from further. So I don't think this should be admissible. Objection, my lord. I think the court has a right to decide whether to accept whom or not. Objection, my lord. He is teaching you how to. That's what I said. I think the court has the right to decide what to do and what not to do. Okay, sir.
So Mickey sir, do Mickey, you do you have want? any cross questions for him? Yeah, so Michael Vespucci, where were you when all this When all this happened, I was delivering tacos. location? I was near the EDM at the time. When this happened, when I saw Paul and Sneha was when they were making tacos. Where do you saw? Well, I was making tacos for my delivery. They were also making tacos for their delivery. Do you have any proof that they were at the location where they are saying that they were delivering tacos? I mean, I don't think I have to provide proof, but yes, when we were leaving the taco place to start our deliveries, we had a casual conversation where I asked him where he had to deliver his next taco, and he told me Jamestown. And we generally have that conversation before delivering tacos, so that if we have the same location, we generally go together. But since we had different locations, he went his way, I went my way. You had a talk, right? But you were not with them. I was with them and we were making tacos. You were with them when they were making tacos, but when they went to deliver, you were not with them. Of course not. We've got different locations. Okay, so Your Honor, my questions for Michael Vespucci. Okay. Do you have anything, prosecution? No, sir. That is it from my side. Okay. What's Paul Shelby stand? Paul Shelby, come on the stands. Michael Vespucci, you can step over from the stands and come beside me. Yes, sir. Your Honor, can I just step out on the courtroom to answer a quick call if you allow me? Yeah, sure. Go ahead. Thank you, sir. वही तो भाई. Does defense want to ask some questions from Paul Shelby? Yes. Go ahead, Officer Mickey. So Mr. Paul Shelby, you were also there for delivering tacos. Yes, sir. So do you have any kind of invoice or something from the house where you're delivering tacos? Any kind of evidence that you were at the scene delivering tacos? Objection, my lord. He is misleading to give proofs for that. He is the Objection witness. He is overruled. in the witness. He's just requesting a proof. So See, sir, usually, yeah, give me a sec. So if I'm not, you were delivering, right? So at that time you were a delivery boy, right? Yeah, sure. So when we sell something or deliver something, we have some invoices, right? Yes, the Can you hear me? company, yeah, I guess that, but the company like who is getting the orders, they will have the invoices and all, right? I'm just the delivery Yeah, boy who's but delivering the stuff. yeah, that's the thing. But you may having the records of that because you are linked with them, and you may have given one invoice to the customer who ordered taco. No, the taco generally doesn't work like that. It's like, you have to do the work, like make the taco yourself only. The lady standing there at the taco shop, whose shop it is, she only tells the location as the order she gets. Okay, she Okay, only gives us the so GPS location. GPS location, right? So as Michael Vespucci said, the location will be coming on email, right? She just tells out the location. Like you have to go to James Street on the house In a number this. That's PIL, all. all She just right. tells you Going out. by the It time doesn't span you said. comes in the mail or any I messages don't know. anything. Okay, so how do you get it? By GPS, right? Yeah. Okay, so what kind of GPS it is? Just shares her GPS with us, and Okay, get it so marked in our. you might be having a GPS. If she would have shared location with you, so you would have a message or text link with that to access the GPS, right? It wasn't like that. Suppose as of example, sir, you want some tacos. Okay, so you give an order to the taco shop.
Okay, and when I prepared the tacos, the lady standing there, she just told that you have to visit the courthouse to deliver the taco. That's all. Okay. It comes with any link or any message or any mails. Go ahead with the further questions. Okay, so Your Honor, I'm done with the question. Okay. And I like to Prosecution. say, Yeah, go ahead. okay, go ahead. No questions from my side, but I will no questions from my side too. Okay, Officer Mickey, go ahead for your statement. So I would like to say that only I would like to say two things that I'm currently in the middle of my can own Mr. divorce. Oh Tripathi my god. prove that the bike was not of them, and also can he stated in his opening Do statement not that share this kind they of were something things on the pitted stream, or bro. rammed by the vehicle? So can they also prove that they were pitted and rammed, as I can't see any medical report? The medical reports are still with the doctor. He was not allowing me to get the reports, so you have to ask for it, and he said that he will be giving it to you on. Okay, Officer Mickey, can you tell me how can you identify any civilian has been rammed by a police vehicle from the medical reports? The doctor may be telling that, like, I don't have any medical knowledge, but I think the doctor can see any marks on the body or anything, and he can state in the report. So how will you understand? Only, for example, I have a medical knowledge. How will you say that if I have a scratch, I have been rammed by a vehicle? How can you say that unless you are the eyewitness? Why the doctor will? I don't think the doctor will make a fake report. Okay, can I ask Mickey to how they got unconscious or something? पता है भाई, They're but just नहीं है ना getting वो. a small hit by this Okay, fire that has been mentioned. Jagnarayan, can you tell me, does Miss Neha has eyewitness for ramming Sherlock? Sir, how can they have eyewitness for ramming Sherlock as they were cops and these people, two people around in the construction site, that abandoned construction site? Why the witness has not been presented in the court? Sir, there are no such No worries, no witnesses worries. for that. We have the medical report for that, but doctor. So, court cannot admit Officer Sherlock has rammed Miss Neha Arora. So, sir, can I ask officer that how they got unconscious from such from such a small hit got hit by that small from the fire that is being mentioned in the MDT? Yeah, so you can check in the report that it's clearly mentioned they were trying to take jumps, and they were trying to take jumps. They were like uh, they got, there was an accident. They So they just were trying to take jumps, not taking jumps, right? What is your point, Mr. Jagnarayan? He yeah. said right now It's that written they took jumps and just they got accident by a concrete pillar. It's stated in the report. objection, my lord. The defense is changing their statements again It and has been again. already written in the MDT report, if you can see. He just said it now that they were trying to take jumps, and now is saying that it was being written in the MDT they were taking jumps. Can I know they were See, trying or they tried? I can consider his statement as he was not on scene officer. He's representing MRPD. I can consider his changing statement as of now. But whatever written is written in MDT is written by the officers on scene, right? So we have to consider that Okay. as well. So can Officer Mickey Yep. tell me how can they prove that the bike present at the scene was theirs only? Yeah, so they saw two people evading on the bike, and the bike actually, which you can see, is blue. At the chase ended, and two peoples who were spotted were Paul Shelby and Sneha Arora, and the number plate of the bike which we got is of Paul Shelby.
So what was the name of the number plate mentioned? Name of the number plate of the Porsche of the bike? You can see it in the evidence. Can you please read it for me, sir, please? Lone wolf. And can't see that at the on scene evidence. It is not lone wolf written over there. Officer Mickey, do you have any other evidences by saying that lone wolf? And sir, I can prove that there is not only one bike that is blue colored in the S2 in the city. I can say there are more than 3 or 4 bikes in the city that are in blue color. With the Yeah, number but plate. yeah, but the number plate is only one, and in the report, it's already stated that two people were trying to flee from the house on the bike, and when the chase ended, we got the bike, and the plate was of Paul Shelby. I don't think so. Two plates will be available in the city of same bike. Sir, I can't see the bike number of I can't clearly see नहीं that मैं bike करूंगा ना, number रुक जा from भाई. that much far away. अभी As माइकल in the बैठा है radar, भाई, I ये can 2 घंटे से see बैठे, इनको आरपी तो some होना other चाहिए. number plate. I don't know मैं what करता हूँ ना, bike डिसमिस करता does हूँ, it रुको जरा. mention. I don't think so. You are understanding my point, Mr. No, sir. If you want, you can prove me that the bike was theirs. Like there are 3 or 4 bikes in the city. Okay, Sneha Arora is give me the number plates of 3 or 4 bikes. okay, sir. Oh. One bike belongs to Sneha Arora. Can Paul tell me what is the number plate of Sneha Arora bike? It's F for Fluffy number plate, same color bike. Officer Mickey, can you check in your entity? Does she has the same bike with the mentioned number plate? What's the number plate? Can you tell me the number? It's F4, then Fluffy, FLUFFY. Yeah, the model is same, but I can't see the bike color actually in my MDT. Check your tablet MDT with the profile of Sneha Arora. भाई ये भी बताऊं मैं मिकी को. Your Honor, we don't actually have photos in MDT. We only have the number plates. Okay, so same model, right? Yeah, model is same. Okay, so now tell me, Sneha has already given a statement that she saw police is chasing a blue bike, right? And Mr. Paul Shelby had a blue bike, Sneha had a blue bike, right? So there were two bikes, blue bikes were present on scene. So either Sneha or Mr. Paul Shelby, police was chasing, right? So there are more bikes of blue color, but I do not have more evidences regarding. Okay, go ahead, Paul Shelby. So I was just to add the color that we are talking about. So it's just the default color that you get from the EDM when you purchase a bike. And also, if you want to confirm about Sneha Arora's bike, her bike was seized like back in 2 weeks before Officer by the Mickey, PV. Sherlock Rogers If you in can town. check that thing. Yeah, That was a Officer. blue bike too. Yeah. Officer Mickey, Sherlock is in city, I guess you can call him. So you can check the seize report of her bike, and you can find the color. But about the color, sir, it's the default color that you get from the EDM. It was not a customized color. Okay. Mr. Michael Vespucci, do you want to say something? Come and Uh, stand. No, Your Honor, I was just asking if I'm not required out here, like, can I, if I'm not required in the case anymore, and if my time is done, am I required to be in the courtroom? Just for wait for 5 to 10 minutes more. All right, sir. Yes, sir. Yes, go ahead.
Also, we were saying some. So I was saying that if you're judging on the color thing, that's a by default color that the PDM guys gives us the bike in. And secondly, if you want to look on the bike color of Miss Neha Arora, so you can check the vehicle seize thing, I guess so, because her bike was also seized like 2-3 weeks Lantikar, back welcome to before stream. by Officer Sherlock for some Tisha reason. So you can hello bro, have welcome in to the stream record bro. of the क्या हाल है? seizure thing, and you can find her bike color too. And also I've seen like Daily two, के three लिए जा more रहा है. people having the same color of the bike. Because as I said, it's the EDM default color that you get. Yeah, no worries. Officer involved is coming or not, Mickey? Yeah, it's Okay, ask him to hurry up. So, Mr. Jagnarayan ji, you are actually defending on which? Let me tell you one thing again, and correct you on this. You are defending your client, not prosecuting. Yeah, I'm defending my client, Yeah, so you are defending but lawyer. I'm prosecuting for the PD. So, on what basis you are prosecuting, and what are the charges? Do you want to Like press against PD? malicious prosecution of my clients and some compensation for the reputation that they have got from the defamation of this case. Okay. And how many charges your client is pleading guilty for? He's pleading for around 30 to 40K for the loss he has I'm occurred. asking about the charges. Your client is pleading guilty or not? He's pleading guilty for lockpicks, but not for that too, because he's a mechanic and he's able to get it as a mechanic. And for that buggery report, he's not pleading guilty for that. Okay. Officer Mickey, you can hand over to Mr. Sherlock. And sir, one more thing, I would be needing a report from the PD that VPN is a legal thing, that as an written report too. Yeah, no we worries. have a report made on him. No, regarding that, that VPN is used in illegal things. Yeah, we have report on it. I said that we have made a report. Okay. Yeah. Do one Okay. thing, Officer Mickey, submit it to the court as soon as possible after this case. Right now, if I can. Yeah, no worries. Officer Where Sherlock? I have to send it? Yes, sir. Yeah, come in the stands and handle your case. Five to seven. Is Sherlock ready for defending the case? क्या बोल रहे हो? Yes, I'm. So can I call Sherlock in the witness box and request Paul Shelby to step aside, Yeah, step sure. down from the Paul Shelby come beside me. So आप नाम बताइए, आप क्या करते हैं बताइए कोर्ट को. My name is Sherlock Rogers. I'm an LSPD officer. Actually, LSPD senior officer, badge number 136. तो आप बताइए कि 31 तारीख को रात 8:30 बजे आपने कैविंटन ईव पे क्या देखा? Regarding this case, exactly, I got a dispatch call from my officer. He was chasing a suspect of house robbery, and I was required over there with a bike. The suspect was driving a bike, and there were two suspects, actually a male and a female, and they were evading on Sorry. a bike. I joined the chase. I tried to stop them multiple times. My lights and sirens were on,
at all times. They took multiple jumps from multiple different locations, but they didn't never come to a stop. So they were like clearly evading from me and my officer. And finally, at the Visa News construction site, they were trying to go for a escape plan basically, and they messed up and they crashed. So their bike kind of got stuck, and both the suspects got arrested on scene. Okay. Which bike? The Ninja, I believe they were driving. You believe or it is? I'm pretty sure if it is in the evidence, the Ninja blue color. Were you present I on also scene? remember. Yes, it was on scene. Okay. Because they crashed it over there on the corner, because I was the primary guy chasing the bike. They were in front of me, they crashed on a pillar, I crashed behind them, so I am clearly aware about it because I crashed over there as well. So you have So to be have you so sure about that. Yeah, I was right behind them and we crashed. So have you got yeah, go ahead, Jagnaran. So have you seen these both guys, the guy and the girl भाई coming दोनों out साइड of के the केस में ही house? लड़ रहा हूँ. I was called on active chase of the 80, so I was not the primary responding officer. I think Officer Shubham was the primary respondent. So does does that has been mentioned in the MDT, or you have any evidence that they came out of the house? Because I can see one Sanchez coming standing over there too. I need to refer to the MDT if you don't mind. Go ahead. Yeah, you can do it. I believe strongly, according to the evidence, I see two bikes on scene. It is a Sanchez and a blue color Ninja over there. If you look at it. So can you tell me which was the bike? Like, can you prove me the bike was of belongs to Porsche be at the scene? Plate number Lone Wolf. I need to run the plate because I don't completely remember whose bike it is. But if it is written in the evidence, I am pretty sure the bike which is captured on scene, Sanchez and a blue bike. The blue bike was being chased because both the suspects hopped on it. We don't know if there was a third suspect inside as well or not. I don't know who the Sanchez belonged to, so I'm not going to comment anything on the Sanchez. But yes, the blue bike was on scene and Point also to be caught. noted, my lord. The Sanchez has not been investigated by the officers, and neither they have seen my clients coming out of the house. Yes, I do not have because I wasn't on the scene. I was called for a chase. So I can't see the number plate of Thierry. Now, not the bike at the scene that it belongs to Porsche. Can you Uh, see it? Yes, there are evidences when we got the bike, the plate number Lone Wolf written on it, and the same blue bike which we had confiscated as well. Okay, let me ask you one more question, Officer Sherlock. जो Yeah. बाइक आपने सीज की है, that was with a plate number Lone Wolf, right? Yes. And what was the plate number of bike found on scene? It was Lone Wolf, same bike. I believe. Near house. Near the house, I don't think so. The officer got enough time to get the same plates if caught on scene. Because I believe Shubham told me when he got on the scene, they came outside the thing. They came outside the house. They sat on the bike. They started escaping. When we were chasing it, the bike, and obviously when we saw there were two suspects, male and female, and we are chasing the same bike without losing visuals. I think when we ran the plates, we got it in the number plate as Lone Wolf, and I'm pretty sure if we don't lose visuals when we are chasing it, we get the plates as well. And these guys are the only ones who crashed over there and then got arrested. Okay, so tell me, आपने किस जगह पे chase join करी? सही question. I'm not pretty
aware about it right now because it has Point to been be a lot noted, of my days. lord. The officer is not cared that which point of time he joined the chase. Exactly, sir, because you don't remember each and everything, right? Like 12 days have passed it, and I don't remember exact spot The where I things I joined it. ask is yes or no, not the explanation. That's it. So, does our officers have any proof that the bike standing at the on scene at the house belongs to Porsche? Be yes or no? I don't think so. So how can you tell that the people at the bike were Porsche BS Neha Arora? Because again, I'm going to repeat myself. Please listen to me. When they came outside the house, we had all the visuals on the bike and the two suspects who hopped on the bike. They were Objection, evading. my lord. They do not have any proof that they come out of the house. The statement Shariok is giving right now is they come out the house, but they do Do not you have want me to any use the evidence at all. names? All right, I'll use the names. No worries with that. Paul and No, they do not have any evidences that they come out. The my clients came out of the You're house. misleading witness. Let him complete. That's my decision to, you know, consider the statement. okay. So now, if a police officer is on scene, for example, Shubham is on scene. Shubham sees two people coming out of the house, one male suspect, one female suspect. They sit on a bike. They are evading. Officer Shubham is constantly following them, and then after few minutes, I join the chase. I am following them at all times. We do not lose visuals. We do not, give them a single time to get away from our visuals, and then they crash eventually. So I think the same people who came out of the house when we don't lose visuals and then they crash, and then when we remove their mask and reveal their identity, are the same guys who were inside the house robbing the house. I think that's pretty clear. Okay, can I ask that? It relates to the thing I say that they got a delivery at the Jamestown, and he joined. Shariok joined the chase after a minute, which is a minute away from the place where the incident happened. So it relates to the story, to the thing I'm saying right now. I'm sorry, I didn't get नहीं you. है पता है मेरे को. Can you reframe your question, please? Yes, Mr. Michael Vespucci, you can leave. Thank you so much, sir. If I'm required in the court, I'll be back at with a public announcement. Yeah, sure. It was not a question, sir. It was just a point to be noted that the point I've said right now is a few minutes ago that uh, they have gone to Jamestown for the taco delivery, and the cops were the visuals, and they saw a blue bike, and the blue bike was also present at the scene. So in a mislead of the career, they followed my clients, Sneha Arora and Objection. Paushal. For what? Mr. Tripathi is saying that our officer lost visuals. How can you say that? Do you have any evidences that they hasn't lost the visuals? Okay, can you tell me, Mr. Jagnarayan ji, how can officer have evidence that they have not lose a visual? How can? Can I say something? You're not audible. You want to say something? Yeah, go ahead, Officer Mickey. Yeah, so in the report, it's clearly mentioned that Shubham said, Officer Shubham made the report. So, by his point of view, he said that he responded, and as he responded, instantly two people came out. They sat on vehicle. He chased them, and he asked Sherlock to come for backup in the chase, and Sherlock joined him. So he was having constant visuals. He didn't lose visuals, and Sherlock joined. So I don't think so. There is some any misleading in the chase, and I think so. They are the same because if they instantly sat in the vehicle and the chase were continuously going on and ended up with both of them, then they may be the same. Can I ask what was the have you done any investigation at what the Sanchez? Why was Sanchez standing over there?
have you seen anyone coming out after the theft? I will like to say, According to yeah, Sherlock. Yep. So basically, when we got the suspect in custody, we got the blue bike, lone wolf plated, back to MRPD. We seized it, and then when one of my officers went over there for making a, performing some investigation or looking for any further evidences, we did not see any Sanchez over there. So I think it got stolen or something. We're not pretty sure about it. can you prove that by any means? Listen, Mr. Jagnarayanji, the police procedure, as the dash cam is available, everything cannot be proven by the police side, but when the burden of proof is at your side, you have to prove that your client is not guilty. So can I ask him that that is the thing I am saying, my lord, that it might be that the other person was doing the thing and my clients got caught due to the misuse of the color of the bike. The sheriff now said that Sanchez was not there after a few minutes when this officer has gone to see the bike. It might be that the person was inside the house and when he hadn't seen the sirens or something, he just silently came out the house and ran from the Sanchez, escaped from the Sanchez. That is it. To this follow-up question, I would say if these guys were not criminally involved into that situation, there was no specific reason to run away from the officers, jumping recklessly from building from pillars to pillars and jumping away from highways to highways. So I don't find these guys for any means to not being stopped and questioned over there. And finally, when they got arrested, they did not give us a clear answer to it as well, rather than just saying they were doing their job. That's all. They are not able to say that because they were requesting for the lawyer at the time. Yep, that's why we came over here. Okay. Partially, you wanna say something? Have you done with Officer Sherlock? Okay, I'm done for Officer Shariok for now. Yeah, Officer Sherlock, you can stand. Yes, Mr. Paul should become on stands again for the last time. Sir, I'd like to say, see, when I spotted, like when I was on my bike at the impound lot, okay, I spotted like one bike maybe and one car, I guess so, was chasing the Sanchez and another blue bike. Okay, they were on scene like at near the Covenant area, as I have seen. Okay, and later on, after some time, while I was going, officer, two bikes actually came after me. Okay, and when I pulled over, there was an accident, and after whatever, like I got unconscious and all thing happened. And as far as my statements are, I was not if you as far as the officer have taken me to the cells and all, they checked me over, they haven't found anything on me that was stolen. I have clearly given Officer Sherlock all the justification of all the items that I was carrying, and he returned me over all the things except my basic lockpick, which I clearly told him that as a being a mechanic, I supposed to carry that because of the inconvenience caused to the public. That's all. How will you explain gold bar found in your pocket? Sir, I told that I got it from the mining. I gave him every detail. See what happened exactly. Officer Sherlock took everything what I was अभी नहीं having in बता my सकता pocket, वो चीज and he JK ने asked कैसा me परफॉर्म किया है. justification for everything what I was carrying. So I gave him every details of everything as Yeah, I can you repeat remember. once again जो भी आपने justification दिया है gold bar के लिए? Yeah, sure, sir. I told him that I was carrying a gold bar, okay, which I had in the mining. Okay, I was carrying a drink which I got in the view. Okay, I bought it from Geo. Okay, I was also having a chair and all. I gave him the justification of every item that I was carrying at that time, and he returned me over everything except the basic lockpick. You can reconfirm this thing with Officer Sherlock. Yes, Sherlock, go ahead. Is it? Can I come on the other stand? Yeah, go ahead. My lord, I would like to tell you a scenario. If there are two suspects involved in a crime, for example, a robbery, there will be one suspect who will be watching a hostage, and the other suspect will be looting the bank.
That's how it works. So basically what I find over here, there were two suspects involved in a house robbery. Probably one was watching the door, second was looting the house from inside. If we didn't find anything on Mr. Paul, we do have a lot of illegal stuff which was found on Miss Neha, which she was involved with him. So I would say they were on a bike for a very long time. They would have exchanged. They would have not. They do not have any evidence regarding that. They both were involved in the same scenario in the same crime. So Objection, if my lord. How, as per the Sheriff said few minutes ago, they were Overruled, chasing them. overruled as of now. Let me Let him complete, complete sir. his statement. Okay. So basically, if they were both involved in the same crime, if we see both the evidence, we should not be only looking at what Paul has, but also what his partner had, Miss Neha. And you will find some stunning evidences over there, some illegal tools like advanced lockpicks, and there would be illegal safecracker as well. So that gives up everything as if they both were involved, and they might or might not have exchanged stuff inside. My bad. With my lord, with permission, can I give a reply to whatever Officer Sherlock claimed? I guess that's it. No more replies, no more arguments. I'll be requesting you guys to give your closing statement, because I guess we already have given you guys have already given multiple statements multiple times, and you have been provided much enough time to complete your statements. Okay, sir. Closing statement from my side will be the officers doesn't have proof that my clients were present at the scene, and it doesn't prove that the bike belongs to them. And I would request you to charge PD with malicious prosecution and compensation for my client. That is it from my side. How much compensation you're expecting? He's expecting for 30K for the defamation and the loss he has uh, faced as he was a huge mechanic in a mechanic shop. Okay. Closing statement from PD side. Yeah, so as you can see, Your Honor, we have enough evidences, and we also can see the evidences of the pockets that Miss Neha was having illegal things on her. So the charges put it on them are, I think, are legit, and they should be given the charge. Okay. uh, after witnessing and seeing evidences submitted by MRPD, this court has come to the conclusion the very first thing, the accusation on officer, that Officer Sherlock has rammed Sneha, which has been proven, which has not been proven, as Officer Sherlock is a bona fide witness from the PD side. The second thing, officer did not submitted reports by Dr. Zaid Malik, so officers will be involved officers will be issuing strict action against it, as they have not submitted their evidences. The doctor denied to give the statement in a court. It's his call. That's up to him if he wants. But still, no evidences for Paul Shelby and Sneha Arora for coming out from the house. Investigation not done properly on Sanchez's bike. That's what I can conclude. So, finally, the thing is, Paul Shelby and Sneha Arora will not be charged for burglary. Rest of the charges will remain same, as they have possession of illegal tools.
possession of illegal tool under class A, and the last thing is evading. If you guys haven't done anything, you shouldn't have been evaded. Objection for this, my lord. But so apologies for verdict. that. But apologies for saying that. But my client Paul Shelby doesn't have any illegal items on him. So I would request you do not charge him for that forgery tools too. You can charge Sneha Arora for them. I would request it. Officer, I would like to, Mr. JK, I would be saying that lockpick is a still illegal thing. If he is a mechanic employee, he shouldn't have been carrying off his job. अगर वो on duty है, he has a right to carry it. अगर वो off duty है and still is carrying, it will be considered as a illegal tool. Apologies, sir. Okay, officers, you can proceed and you can do the needful. As of now, I'll be dismissing their jail statement, but you should be fining these guys for the possession of illegal tools and reckless evading if you haven't fined. Paul Shelby, you wanna say something? Yes, sir, with due permission from the judge, sir. Yes, go ahead. Sir, just to add up, sir, Sneha Arora was already charged and been jailed, as also she proved not guilty by Officer Shubham. She has not proven guilty for burglary. Yeah, she was already, well, she's already been jailed for that thing. I got bailed out, okay, but she was jailed. And Okay, charged with all the charges. I'll be needing her written statement for that she has been jailed, or the statement from officers involved. Definitely will be given to you. So what was it? Was she jailed for this? Actually, she had a code 0 and she came back a while after all this has done, and I believe one of the officers might not have been aware about the whole situation, and It both was the Officer Shubham on-site who officers processed. were. If He was Shubham the has main done it, officer, yeah. then I have to take the report from Shubham only. But No our worries. report will be sent to you directly. Yeah, sure. So once the report has been submitted to the court will give the final verdict on the compensation from PD side to Ms. Neha Arora. Definitely. Case is dismissed for now. Court is urgent. Thank you, sir. You can step over. आ जाइए. Can we take him in custody, sir? Negative on that. You can just fine him with a receipt. You might be having your receipts. Fine तो हो गया था. Sir, I was already fined and then I was bailed. Sir, so what about the reckless evading and illegal tools ka jail time? I have already said that no jail. I'm reducing his jail time to 0. Okay, then इसने जो into 3 times दिया था, वो इसे वापस मिलेगा because he was proven guilty for burglary, illegal items and evading. तो क्या करना है basically? Okay, 3 times diya tha. So do one thing. Who has the amount of this bail? Bail amount is Officer Shubham. Believe Shubham. Officer Shubham, yeah. Okay. So do one thing. Ask him to submit the amount to me. Okay. And probably by minusing burglary charge, whatever it may be, जो burglary charge का 3 times होगा, उनको return कर दो. Alright, definitely. And just sir, I would like to add up, like my NOC was also revoked till the. Yeah, obviously, NOC would be revoked. So just possession of illegal, and remove the prior. Yeah, remove the prior of burglary on this. Yep, and you'll get NOC. But be careful from the next time. Do not evade the police. They got me near the Visual News and I pulled over at the construction, but as he was in a rush, so we had pulled over. You basically and I was jumped unconscious okay. at the place. I got unconscious at the place. I didn't get any. No worries. Evidence doesn't prove that you have pulled over. Anyway, the case is urgent. Your court is urgent. Thank you. You guys can leave now. Thank you, sir. Alright, Thank Mickey. you so much. So the compensation to Sneha Arora will be provided
for the jail time. Okay, sir. Officer Sherlock, Yep. submit me the report from Shubham ASAP. Yeah, I'll definitely let him. I'll tell him to get you the report and the bail amount as well. Sure. And make sure you officers are following the procedures and submitting all the evidences. Now I'll be issuing a warning to officers for not submitting their evidences. Definitely. सर वो थोड़ा वो कर देते तो NOC सर का वो वापस कर देते, रिवोक किया था ना गन लाइसेंस का भी आप बात केस कर रहे नहीं हो, होता अगर हो पाए रिवोक है तो वो थोड़ा डाल दे तो मेरे को जॉब मिल जाती है आज मेरा वापस। गन लाइसेंस वो का थोड़ा टाइम लग जाएगा, करवाता हूँ। FIR भी लिखवाई थी मैंने रिगार्डिंग मैं 3 बार हॉस्टेज उठा था। फास्ट होता है ना तभी, बिना एविडेंस के। उसका एविडेंस नंबर आपने एप्लीकेशन दिया है? हाँ सर। ठीक है, let's do one thing. The day after tomorrow will 14, right? Yeah, on 14 we'll put a hearing on this. We will need to file a petition for this. I have been short, sir. I've been short. Yeah, no worries. The day after tomorrow will be hearing your case and Like, will be can I issuing. get something for my protection, like taser or something from the PD, or for the meantime, not getting the license for it? Mind I interrupt once? Yeah, give me a minute. You can wait for 2 days. Because I have been taken hostage 3 times and on the guns too. मेरे को 3 बार गन्स पे उठाया गया गन पॉइंट पे, और कल तो मेरे को गोली मारी गई है जिसके मेरी सर्जरी भी हुई है, जिसका रिपोर्ट अभी मेरे को डॉक्टर लिंकन भेजेंगे। That is it. काफी सर फोन Okay, do one thing. Do one thing. Prepare one document saying that you have been shot and attach your report and submit it to the court. Will be here starting hearing for weapon license for the public servants. Okay. Yeah. Okay, sir. Sure. Yes. तो NOC कब मिला? बिकॉज जब जिस दिन सर आई वाज अक्यूज्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई टुक अ बेल, बट मेरा NOC जो था, आई वाज वर्किंग इन द TLMC मैकेनिक शॉप, वो उस टाइम के लिए रिवोक किया गया था जस्ट अंटिल द केस इज डन। Yeah, no worries. आफ्टर So, दैट unless the verdict is publicly announced, your NOC shall be remain. But अभी के लिए जब भी ये report submit होगा, so after report submission I'll announce it publicly the case verdict, and after that you'll get NOC. Don't worry. Okay, sure sir, thank you sir. Yeah. Thank you. चलो भाई, दत्ता ने क्या बोला? बोनस वोनस मिलेगा? पैसे की तंगी चल रही सर बहुत। क्लाइंट से ले लो। क्लाइंट से कितना लूँगा? कितना लेना चाहिए बताओ आप बताओ, आपने कितने बचाए उसके पैसे? बचाया तो बहुत है सर। जितने बचाए उसमें से परसेंट ले लो। कितने का बचाया मैंने? 30,000 का कंपनसेशन कहा था, जो अभी उनको मिला नहीं है, वो क्या ही देंगे। 15 के मांग रहा मैं, इससे ज्यादा 15 का 10 के मांग रहा। और 10 के मांग रहे हो? उसका कितना बचा? पब्लिक सर, पब्लिक डिफेंडर हो ना सर मैं। अच्छा, तो आपको तो सैलरी तो मिलती होगी। आप बताओ कितना लेना चाहिए? उससे ले लो, नॉमिनल अमाउंट ले लो कुछ। आपको तो वैसे भी सैलरी मिलती है, 4-5 हज़ार ले लो उससे। ठीक है, 5,000 ये रहने आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। हाँ मेरे लिए। नहीं तो साला सोचेंगे कि ब्राइब ले रहे हैं। So can I carry knife for the like no, क्योंकि सर you cannot carry anything which is lethal as of now. Okay, got it. Okay sir, you wanna go somewhere? No, I'll go by my vehicle. Okay. Let's go. I have been shot, but no worries। कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई। कहाँ हो? आते आएगा अभी। क्या टाइम हुआ है?
वैसे हमने लेट चालू किया है क्या? वाह बेटा, क्या टाइम हुआ है बे? 2 घंटे हो गए ना, और थोड़ा सा करते हैं फिर निकल रहा है। नहीं, इसका लॉक पिक का अगर मेरे को इनआरपी पता चलता है ना, तो इसका तो मैं लाइसेंस रिवोक कर दूंगा। बट एनीवे एक्टिव है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको भाई। किसका था रे? शौकीन, नेवर माइंड। कोई है क्या शहर में? हेलो हेलो हेलो, who's this? तात्या विंसु। ताता भी। हाँ भाई बोलो, क्या काम है? किधर हो? नंबर क्यों चेंज किया? 100 या 100 420 ये काय विषय? एम लो हाँ हाँ, नया ये सिम कार्ड नंबर नया सिम कार्ड मिला था, ले लिया। पैसा आ रहा है क्या बहुत तुम पे? पॉकेट में था। क्या क्या? किधर हो पॉकेट में। तुम, किधर हो? अभी पीढ़ी के बाहर हो, लीजन पे आ रहा हूँ। लीजन पर हम मच्छी मार रहे भाई, मच्छी मार रहे। आ रहे हो क्या मच्छी मारने? नहीं यार, कर लो फिर तुम। कौन कौन है? मैं और आयुष बच्चा है। अच्छा कोई ना, कर लो। अच्छा और तो कोई है रुको, क्या? तो हम लोग नहीं, तो रुको हम लोग आ रहे। नहीं हमको भी नहीं, कर वैसे लो बोर कर हो लो। रहा था। अच्छा, आ जाओ आ फिर। रहे आ रहे, हम लोग गाड़ी लीजन लेके पे आ रुक रहे। रहा हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा संभाल के, कोई हॉस्टेज ना बना ले। पीढ़ी हम्म। पे रुको, पीढ़ी पे रुको, नहीं तो। ठीक है, पीढ़ी पे रुकता हूँ। हाँ पीढ़ी के कान चबाओ, आ रहे हम लोग तब तक। ठीक। ओए चल बे, फिशिंग बंद कर। 1 मिनट देना गाइस।
कोई फोन मार रहा था। जी भाई जी, हमको बोलो लगा बोलो। तुमको किसी ने हमको लगा कि तुमको किसी ने हॉस्टेज बना लिया। नहीं नहीं, पीढ़ी पे हो, बोलो। अच्छा, अपना रेडियो क्या हो? 78.6। 78.6। ठीक है ठीक। जल्दी आओ जल्दी आओ। रेडियो चेक। यो बिच्छू के बिच्छू कैसन बा? क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई अभी हम लोग आ रहे तुमको उठाने को, जरा तैयार रहना, ज्यादा सामान विमान कर लेके। किस चीज का सामान? पैसा रे, पैसा पैसा। पैसा? तुमको अब हम हॉस्टेज बना रहे हैं। वाह बेटा। अच्छा वैसे ताता जी, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मिलोगे? जरा हम लोग आ रहे तभी मिलके बात कर दे, फुल गंभीर विषय। ठीक चल बे हेटर, आगे चल। ठीक है। मेरा हेटर है, तुमको पता है क्या जिंदगी में? वो ताता बिच्छू, डू यू नो माई हेटर? नहीं। ये क्या? रेडियो तू पे कुछ पकड़ ज्यादा नहीं बसट पाएगा नहीं क्या? क्या? अपना अपना घर का रेडियो कितना भी बसड़ करो। इससे तो अच्छा मैं रेडियो बंद कर दूं। अच्छा तुम तुम्हारे लोकेशन तो बताओ, हम लोग आ गए तुमको उठाने के लिए। पीढ़ी। पीडी ना? एम लो। हाँ हाँ, पीढ़ी। टीटी का आया है। आयुष, बस स्टॉप के इधर में मेरी गाड़ी, ये गाड़ी पार्क कर रहा है तो तेरे गाड़ी में घूमते हैं। ठीक ठीक। भाई गाड़ी बड़ी खरीद ली भाई। हेटर टेलीपोर्टेशन जित्सु मार रहा है क्या तू भी? चिपका नहीं इधर। हाँ भाई, तेरा गंदा वाला। वाह बेटा, लॉक भी नहीं किया ये। ये देखो। देख रहा है वे ड्राइविंग स्किल्स। हाँ जी भाई हेटर। चलो। इधर। किधर चलना है? दिल अब में। बता। क्या बात करनी थी, बोलो। अरे बात ऐसी है कि तुम हो कहाँ पे रे इतने दिन से? हमको लगा तुम वो 2-3 दिन गाना बोलने के बाद तुम्हारा गले का खराश हो गया और तुम निकल गए। हम लोग लगा गचक गए तुम। नहीं, आराम कर रहा था मोटल पे। हाँ 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 हाँ, सही है सही है। अच्छा तो ये बात है कि अपने को ढूंढना है लैपटॉप। वो क्या होता है? ठीक है। मतलब किस चीज के लैपटॉप लिए? लैपटॉप लैपटॉप रहता है, लैपटॉप पे कुछ एबीसीडी आता है, वो इसके लिए मांगता है अपने को। अच्छा। ले था, रुक जा, अपन एक लोकेशन जाते उधर जाके बात करेंगे इसकी बहस की। इधर पियर लियो। हैं? हाँ हाँ, हाँ। मैं बताता हूँ, चल भाई। पियर पियर अपना वो बड़ी वो सर्कस वाला पियर। बिच्छा मच्छा गैंग। सॉरी सॉरी, माफ करो माफ करो। सोद दिस भाई गाड़ी। वाह। ये रेसर्स बनेंगे, ये रेसर्स बनेंगे भाई। मेरे से कुछ ड्राइविंग स्किल सीख लो। इधर ही ना है ना। यस यस। बट इतना अर्जेंट ब्रेक मारने को नहीं बोला था। थोड़ी सी घासटी गाड़ी तभी भी चलता था, पर इतना नहीं घासने चाहिए। ऊपर जाना था बट ठीक है। है ना। हाँ बट ऊपर जाना था। चल के जाएंगे। नहीं भाई, गाड़ी है भाई, गाड़ी चोरी हो जाए। हाँ ताता बिच्छू जी, पीछे आओ ताता बिच्छू, पीछे आओ। भाग क्यों रहे हो? जोर तुम्हारे की लगी क्या? हाँ जरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजा।
सॉरी क्या बोलते हैं मैटर है। पैदल नहीं चल सकते क्या? भाग क्यों रहे हो? नहीं, अरे अभी भागना ही पड़ रहा है, बहुत स्लो डाउन हो कुछ गए। चुभा क्या? चुबा क्या? ऐको माझ्या मागे पडला तो. चुबा क्या तेरे को? तात्या वही उपट टाक त्याला. गिरा दिया भाई। He is not giving a shit bro. ये आराम से चल बे, तात्या से नहीं चलना जाएगा, बुढ़े हो गए वो। हाँ सॉरी, एज हो गया उसका थोड़ा सा। माना कि जेब से गरीब है। हाँ हाँ, अभी तुम क्यों भाग रहा है? ये देखा क्या, खुद भाग रहा है फिर बोलेगा भाई तुम भाग रहे। बताओ क्या विषय? अरे जाम मोटा गंभीर विषय अच्छा। मैटर है। बैठ के बात करते हैं, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। इधर इधर बैठते, इधर तुम बैठो। बोलो तुम बोलो। दोनों बैठो, इधर बैठो बैठो, इधर आओ बैठो। हम तो अपनी कुर्सी लेके चलते हैं। बोलो। रुको जरा, जरा अजीब गर्मी लग रहा है थोड़ा सा। बस तेरी भेज दिया। अच्छा ट्रायंगल में खड़ा रहते क्या? हाँ। मना की जेब से फकीर है। तो काम की बात। तात्या, हाँ तात्या तो एक बात है, अपने को मांगता है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप में कुछ आते हैं ABCD कॉन्ट्रैक्ट, कि वो अभी ABCD कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये अपने को पता नहीं। फिर आता है वो कुछ फिर आता है VPN और क्या बोलते हैं क्रिप्टोस्टिक। VPN अपने पास दो है, एक आयुष के पास है और एक राजू पाटिल के पास। रही बात क्रिप्टोस्टिक की, क्रिप्टोस्टिक मिलती है टाको में। तेरे को टाको पता है क्या है? नहीं। मरो वो मैक्सिकन खाना रहता है रे, थोड़ा सा ऐसा। मैं सीरियसली बोलूं, मेरे को शहर में घूमते हुए आज दूसरा दिन है। हाँ तो इसलिए तो तेरे को समझा रहे। बताओ बताओ। तो ये सबसे महंगी चीज है शहर में। अगर ये तेरे को मिलती है तू ये इनको तू 2-3 लाख में बेच सकता है। क्या बात कर रहे हैं? यस। अच्छा। क्रिप्टो स्टिक तो भाई कितने में जा रही है बे? $70,000। 25 हाँ। तू अच्छा एकदम बकरा ढूंढेगा तो 70-80 में बेच देगा तू। अच्छा, उससे क्या होता है? बहुत वैल्यू उसकी। पता नहीं भाई क्या होता है, बट होता है। तो मैंने एक ऐसा येलो पेज पे कांटेक्ट आया था सर्किट स्टोर नटवर लाल का। तो मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने उनको पूछा कि भाई तुम लैपटॉप बेच रहे हो, पर लैपटॉप से क्या होता है? तो मेरे को बोलते हैं मैं तुमको लैपटॉप, क्रिप्टोस्टिक और VPN ये तीनों का ये बता दूंगा यूज। ठीक। तो वही है, बट वो बताने के $10,000, लैपटॉप $70,000 का, और हम है भिखारी, हमारे पास नहीं है पैसा यही बात है। अच्छा। क्योंकि मैंने तो जॉर्डन्स में अभी पैसे खर्च किए $50,000, तो अभी तो पैसे नहीं है। और सेकंड बात भाई, रेस होती है तो हम लोग गए थे लीगल रेस में। लीगल रेस में तुम्हारे भाई ने मारा बाप फुल छक। तेरी भैंस की आँख। हाथ नहीं चले, हाथ नहीं चले, चाकू मारूंगा नहीं तो तेरी। हाँ। तो उसमें हम गए थे, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गए, बट ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सा नाम बन रहा है, थोड़े थोड़े से लोग जान रहे हैं। अभी हम लोग ने पता है क्या, एक सीनू भाई करके बंदा है, ठीक है। उन्होंने हमको हाउस रॉबरी करना सिखाया, मतलब इसका हाउस लॉक खोलना। रॉबरी? हाँ भाई। घर पड़ा पड़ी। तुम लोग चोरी करते हो? नहीं, तो हम लोग वसूली करने गए थे। किस चीज की वसूली करने गए थे? उसने पैसा लिया था, वो कोई बंदा था, तो उसने पैसा नहीं दिया, तो हम उसके घर में गए, उसके घर का सामान उठा के लेके आए बाहर, उनको सीनू को दे दिया, सिंपल। अच्छा। उसने हमको यही बताया कि भाई हाउस रॉबरी है ये, बट वैसा वाला हाउस रॉबरी नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये ऐसा वाला है कि वसूली वाला हाउस रॉबरी। बोला इसको ठीक वसूली है बोलो ठीक है। ना, वसूली बोलो ना इसको, रॉबरी क्यों बोल रहे हाँ, हो? अरे वही वो उसके घर का सामान उठा मतलब के कल लाना, पता मतलब वही। चलेगा कि मैं जिनके साथ घूम रहा हूँ वो चोर हाँ है और पुलिस मेरे को उठा के चली गई। हाँ, ये ठीक है ना, रिस्क तो रहता है भाई हर एक काम में। रिस्क है तो इसका है।
वही तो। वसूली पे अगर तुम लोग वसूली करने जाते हो तो तुम लोग को वसूली से पैसा मिलता है, मतलब जो जिसके लिए वसूली करने जा रहे हो उससे पैसा मिलेगा ना, तो उसका जॉब हाँ, आईडी। और सामान भी मिल रहा है। तुमको पता है लॉक पिक मिल रही है हमको। लॉक पिक क्या होता है? लॉक पिक ये गाड़ी चुराने के काम आता है। अच्छा, गाड़ी भी चुराते हो आप? तो अभी तुमको गाड़ी में कौन सी गाड़ी में बिठा के लगाएगी? ये हमने रेंटल की ली थी। ये रेंटल है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, गाड़ी भी चुराते हो क्या? नहीं, वो उसने बताया कि लॉक पिक से गाड़ी चुराई जा सकती है, घर फोड़े जा सकते हैं, मतलब घर का ताला। तो ऐसी चीज है तो पुलिस को बताना चाहिए भाई ये। हाँ, बट तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो तुम देखो, सीधी सी बात, पुलिस से पैसा नहीं मिलने वाला अपने को, जिससे पैसा मिल रहा है उसके लिए इज्जत से काम करो। अभी तो हम दोनों का एक ही है कि भाई गाड़ी लेना है, थोड़ा सा अपना घर शहर लेना है, खुद का एक छोटा सा गैरेज डालना है घर के सामने, बात खत्म। गैरेज डालना है वो तो, उसमें मैं काम मदद कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को गाड़ियों का बहुत नॉलेज है और मेरा इंजीनियरिंग जो है वो भी ऑटोमोबाइल है। हाँ तो सेम टू तो सेम। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तुम दोनों गाड़ियां बना लो, मैं गाड़ियां ट्यून कर दूंगा, बात खत्म। क्या सोचते ताते? कैसे करेंगे? बट उस मेरे पास तो बट वैसे उस भी पैसा नहीं है, मैं अभी तो लैंड हुआ हूँ, मेरे को तो पहले जॉब ढूंढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम फिशिंग कर लो। फिशिंग में मतलब पैसा है, ठीक ठाक है, 10,000 $10,000 मिल जाते हैं कितने मच्छी टाइम पे? पकड़ेगा तो। कितना टाइम का मतलब 20 मिनट में $10,000 है। सही है। हाँ, इसके वजह से तो हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कभी कभी जाते हैं, फिशिंग करते हैं, जब ऐसा लगता है कि हाँ भाई सफिशिएंट मनी है, सो आई कैन बाय क्लॉथ, आई कैन बाय माय फूड, अच्छा। तो हम लोग फिशिंग करना बंद कर देते हैं। जब फिर से पैसे की कमतरता होती है फिर हम जाते हैं फिशिंग करने, तब तक हम मटर बेचते रहते हैं। सही है। बट सेविंग्स ही नहीं हो रहा है गाड़ी के लिए, ये बात अलग है। हम्म। तब तक मैंने और आयुष ने भी क्या सोचा था कि अपार्टमेंट्स हम रह रहे हैं, इससे अच्छा एक 4 डोर कार ले ले, आगे की सीट में ये सोया करेगा, पीछे की सीट में मैं सोया करूंगा। अभी तुम आ रहे हो तो तुम अभी क्या और एक गाड़ी लेनी पड़ेगी बड़ी वाली, तो फिर सही है। तुम्हारे देखते क्या हैं। प्लान है आगे का? मेरा तुम तो टेको तो। अभी मेरा तो अभी जॉब करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, फिर देखते हैं, मैं तो मैकेनिक बोल रहा शॉप, हूँ खुद की फिशिंग कर मैकेनिक लो। शॉप डालेंगे फिर। मैं तो बोल रहा हूँ फिशिंग कर लो। फिशिंग के लिए टाइम बहुत लगता है रे। नहीं लगता है यार, आयुष को पूछ लो। हम दोनों इतने क्या बोलते हैं, आलसी इंसान भाई, 10 मिनट जाके फिशिंग करके फटाफट आ जाते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा है, वागोस? इधर हाँ, क्या वागोस? क्या पता भाई, वो राजू पाटिल को पता भाई, और क्या वागोस हागोस क्या मुंह बोलते रहते हैं, अपने को नहीं आइडिया भाई। अच्छा। नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया। वो क्या करता है, मैंने तो राजू पटेल क्या करता है? राजू पाटिल तो दूसरों की टांग बात में टांग अड़ाता है। वो पीढ़ी को मारने के पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों। तो हम लोग ने तो बोल दिया कि भाई वी आर नॉट, हम दोनों तो आउट है भाई, तेरे साथ जो आएगा आएगा। कि मेरा तो पीढ़ी के साथ अच्छा है भाई, वो कांतिलाल है, फिर वो चुलबुल पांडे है, वो दोनों तो हम लोग से अच्छे से बात करते हैं। फिर हम लोग क्यों पीढ़ी से नड़े, और पीढ़ी भाई अपने को जेल में डाल देगी तो हो गया भाई, बात खत्म। वही तो। तो तुम व्हाट्सअप क्यों डाल रहे हो? हम है ना इंस्टाग्राम वाले इधर। हाँ हाँ, है तो सही। हम लोग लाइक करेंगे खाली। पीडीएम ओपन, पीडीएम खुलता कब, ये मेन लफड़ा है। अभी तो देखो हम दोनों ने मतलब इतना टाइम से है, बट फिशिंग करके हम लोग ने बस 20 या फिर $30,000 ही कमा है। तो बहुत तुम है वो सोच तो सकते हमारे हैं पास। क्या घंटा बहुत है भाई, इधर भाई खाना ही 5 से 6 हजार $का जा रहा है। क्या बात कर रहे हो, दिन का? हाँ हाँ। ओ भाई। तो करना पड़ता है कुछ। अभी वो सीनू ने तो हमको ऑफर दिया कि भाई तुम वसूली करो, हम तुमको पैसा देगा, या फिर कैसे? वो सामान देगा। सामान के बदले पैसे। सामान का बदले पैसा देगा नहीं। और एक बात, किसी को बताना मत, इधर आओ इधर आओ, पास में आओ, बोलो पास बोलो, में आओ। कोई नहीं है सुनने वाला यहाँ पे। अरे भाई दे पक्का ना, आयुष पीछे पीछे थे क्यों जरा। हाँ तो एक बात है, हम लोग जब वसूली करने गए थे तो हमको कुछ वो गॉड्स जॉइंट मिला था, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है? पता नहीं मिला था, मैंने सुमड़ी में अपने जेब में रख दिया। अच्छा। मतलब चोर से ही चोर, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा मार दिया, देखा थोड़ा सा यूनिक लगा तो रख दिया। वो सीनू को बताया भाई ऐसा ऐसा है, तो वो जहाँ रख लो आप।
तो उसी तो फिर मैंने टेस्ट मारा उसको, तो लाइक इट्स वर्क्स लाइक काइंड ऑफ बॉडी आर्मर वाला थिंग। अच्छा, ऐसा कैसे? पता नहीं, मतलब आई थिंक है ना, वो शायद नशा करने के बाद अपने को सामने वाला मारेगा तो भी ज्यादा नहीं लगेगा। एड्रेलिन हाँ यूज। शायद से एड्रेलिन, क्या पता है भाई, कुछ हो रहता है वो, कुछ तो होता है उससे। एड्रेनलिन। बट इतना ही बोलूंगा, मैंने जब मारा वो, आई थिंक उसका असर 5 से 6 मिनट रहा, बट 5 से 6 मिनट में मैं जितना भी गिरा, ठीक है, बट मेरे को लगा नहीं, मतलब मेरे को फील नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा वाला सीन। नशा तो वही तो रहता है, नशा करना ही नहीं चाहिए। नशा करने के बाद जो ब्रेन पे जो कंट्रोल रहता है ना, वो निकल जाता है, और ठीक फिर है, आपके साथ जो भी होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। ये बात भी है, बट ठीक है, बट वो मैंने एक ही बार ट्राई किया, सही था। वैसे मास्क क्यों पहना है तुम लोगों ने? ये ऐसे ही सब लोग पहनते, इसलिए हम लोग ने भी अच्छा, पहना। किससे मुंह छुपाते फिर रहे हो? किसी से नहीं। ये लो भाई, तुम डर रहे हो क्या हम? ना, डरते तो हम अपने चिच्चा से भी नहीं है। लो भाई, छावई को देख लो तुम। ये तो टिकटॉक का मोमबत्ती लग रहा है। कौन? आयुष ना, ठीक है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हाँ वही वही आयुष, वही। अच्छा, ये आयुष जैकेट है क्या? कौन? हाँ हाँ ये आयुष है क्या? हाँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये चार्ली है। नहीं आयुष है वो। ये कौन है फिर? वो बाबू रगड़ा। और ये कौन है फिर? ये बाबू रगड़ा पार्ट 2। तो मैं कौन हूँ भाई? ताते बिच्छू। ये भी सही है। हाँ अभी बोलो, अभी बोलो, ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो। अभी जस्ट ना के आया हम। इसलिए तो साला स्मेल यहाँ तक आ रही है। नहीं भाई, ग्रेप सीड गए थे नहाने को, मच्छी पकड़ते पकड़ते 2-3 डुबकी मार के आ गए। वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए स्मेल यहाँ तक आ रही है। तो अच्छी आएगी भाई, दो क्या है। अब मच्छी की स्मेल आ रही है भाई। अच्छा ऐसा बोलो ना, तो हम लोग मच्छी लेके गाड़ी में रखे थे। मच्छी मार्केट। हाँ तुमको पता है क्या भाई, डॉल्फिन, शार्क, इसका पैसा बहुत मिलता है। वो और तो तुमको कोई प्रोटेक्टेड में बोलेगा, आता है ना वो। नहीं नहीं इतना नहीं। और तुमको अगर कोई कुछ बोले कि भाई बड़ी मच्छी, मतलब डॉल्फिन, शार्क, बाद में हैमर वाले, हैमर बीमर कुछ वो शार्क रहते हो, वो तुमसे ले लेगा $200 में, और उसका असली कॉस्ट है $250 to $300। अरे बाप रे। हाँ तो बच के रहना, स्कैम से बच के रहना, बता रहा हूँ। और क्या यस। क्या स्कैम होते हैं? अरे हम लोग के साथ एक ही हुआ था, फिर हम लोग ने उसके साथ स्कैम कर दिया। मेरे साथ भी एक हुआ था। प्रोटेक्शन किधर है? मेरे साथ भी पूरा एक भाई, स्कैम हुआ था। पूरा भाई, पूरा भाई, पूरा अंदर। हाँ हाँ, इज्जत में पीछे लटकाने का है, ज्यादा लाड़ में नहीं आने का। क्या? अरे तुमको पता है कि हमारे पास राइफल भी है, क्या खेल लेंगे तुमको। धमकी दे रहे हो? भाई आयुष भाग मारेगा भाई, बूढ़ा सटक गया, बुड्ढे का दिमाग कसका भाई। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी दे रहे हो? मारो क्या? पानी मारो पूरी क्या? मार। गया गया। बाबू भैया जिंदा हो। मर गया वो। गया गया। ला 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 ला। मर गया चादर मोर। बच गया भाई, बच गया। हाँ भाई बेटे, ये बुढ़ा हो, साला बुढ़ा पागल हो गया भाई, पाग इसकी बेस की। ओए बुढ़ा हो, किधर है? ऊपर है भाई, देख 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 पीछे।
ओ भाई लग गई। बुढ़ाओ खुदा क्या? बुढ़ाओ लगा ना तुमको भी? नहीं, सर पे गिरा सीधा। सूर मारा था मैंने, सूर। दूर निकल गया, इधर हमारा सूर मारा था। 4 सीटर ढूंढो भाई, 4 सीटर ढूंढो। अपनी किधर है? ये डिंका लेके घूम रहा है भाई कोई तो। ए हिटर गायब। ये व्हाइट वाले देख, व्हाइट वाले 4 सीटर है मे बी। अरे ये तो यहाँ पे 4 सीटर कोई तो गाड़ी। हम कौन सी गाड़ी में आए थे? सुल्तान सुल्तान। अच्छा बिच्छू जी, तुम्हारे पास बैंडेज है क्या? नहीं, छे, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खाना है, वो भी चॉकलेट्स है, वो भी किसी से मैंने लिए हुए शायद। तो बर्गर शॉट चलते, बर्गर शॉट चलते। रुक जाओ, इधर वो गाड़ी मिली आयुष? गाड़ी कहाँ पे पार्क करी थी? वो नहीं मिली। साइकिल दियो चाचा। अरे वो चाचा के चक्कर में तू मेरे को ठेल देगा बे बूढ़ा हो। भाई आयुष ये पागल हो गया भाई, तात्या पागल हो गया, मारेगा लग रहा है ये। डाल लिया भाई। रुक जा रुक जा रुक जा, पिकअप कर पिकअप कर। तेरे को बोला ना भाई, पागल हो गया भाई ये। कुछ काटा भाई बिच्छू बिच्छू इसको। बैठो भाई। ओए बिच्छू भाई, ओए जहरीला। ले तुम्हारे लिए ये क्या, कौन सी गाड़ी है? बेंटली बनता है। सस्ती बेंटली लाया भाई तो। फुल रेंटल, फुल रेंट। बेलारूस, क्या नाम है इसका? नहीं बेलेर है ना ये? बेला नहीं, बेला इनस। चाओ। नहीं भाई, ट्विटर पे कोई तो था ये बेला। इनस नाम है। हारमोनी रिपेयर सर्विस ओपन, कॉल मी फॉर सर्विसिंग, प्लीज यूज फुल स्टॉप नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या ये ट्विटर को व्हाट्सएप बनाया है भाई? क्या है? पता नहीं भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा पिल बॉक्स हो जाता तो हे। वाह भाई। सर दर्द कर रहा है भाई, नैन्सी से मिलके आ जाऊं। ये अच्छा ये बोलो। रोड्स किस चीज के लिए दिए हुए हैं पता है? नहीं। अच्छा, तभी ये ड्राइवर गाड़ी ऐसे चला रहा है। हेवी ड्राइवर है। हेवी ड्राइवर है भाई वो। मेरे को लगता है मेरे को टाइम लगेगा ये शहर के कायदे कानून समझने में जरा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्रॉस मार। हाँ नाइस वन। भाई क्या अच्छा चला रहे हो? अरे तुमको पता है क्या? बोलो। रुको, नैन्सी के पास जाके आने के बाद बात कर। भाई शी की ढेकर विकर मार दिया क्या? डॉक्टर है क्या? नहीं है। पानी पी। पानी किधर है? इधर इधर। हाँ फ्री का पानी पी लो। फ्री का? यहाँ पे फ्री का मिलता है क्या? फ्री पानी मिलता है। आयुष पैसा कम हो रहा है, $10,000। टिक टिक। कितने लोग देख रहे हैं गाइस? अभी किधर है बे बूढ़ा होती भी अभी तो गया। गरम खून खोला दिया तूने, गलत इंसान से पंगा लिया। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जी नमस्ते। डॉक्टर जी हाउ आर यू डॉक्टर? डॉक्टर जी हम फुकट पानी पीने आए। आप एकदम बढ़िया। अरे कुछ तो सर दर्द हो रहा है मेरा, एक बार देख लोगे? हाँ ये बूढ़ा होगा सर दर्द। अरे तुमको पता था ये भाई पागल हो गए थे अभी। ये हैचिट लेके पीछे पड़ गए भाई हमारे। सर अंदर रख लीजिए अंदर। अरे वो उन्होंने ऐसे पार्ट पे अभी टांग के रखे, बाद में तो हाथ में निकल के मारने बिरने दौड़ेंगे भाई। बड़ा मैं खर्चा करके चाहिए तेरे को, तू लेट जा। लेट जाइए सर। अरे
देखा देखा देखा, मैं बोला था ना, डॉक्टर बोला था ना तुमको। कोई बात नहीं सर, आप लेट जाइए इसलिए ना आराम से बस। मेरे को देखो इसलिए भाई, ना- स्क्रू भी कुछ ढीले है क्या, टाइट कर लो। ये देखो भाई, ये इसने चक्कू निकाला है। मैंने तुमको बड़ा दिख रहा है सर लेटने अपने के पहले बाद आप चेक लोग आप मास्क निकाल लीजिए सर। हाँ निकाल रहा है। अरे वो सप्रेशन काटने के लिए। तुम्हारे लिए जान भी आती है मास्क क्या चीज है। ये बूढ़ा होगा, देखो कौन सा कौन सा पुर्जा बताइए विर्जा सर, ढीला क्या है। हो रहा है, कब से हो रहा है आपको सर दर्द? आज से ही हो रहा है शायद से। नहीं, ये जो सर इनको बात जैकेट, करने दीजिए। ये जो जैकेट में बंदा है ना, इसको मिलने के बाद से हो रहा है। देखा जैकेट बोला ना आज से। दोनों ने भी पहना जैकेट सर। ये वाइट दोनों का शायद आप पे भी असर हो गया शायद, लग रहा है। देखा मैंने बोला ना ये बूढ़ा वो पागल हो गया। ये वाइट हुडी वाला जो है ना, हुडी उसमें- वाला, हाँ। ओके ओके। ये हाँ तो देखा आप देखा ये आपके क्या ऊपर में करता है नाम ना, डाल रहा है। ये क्या करता है ना, नहीं कोई बात नहीं सर, आप लोग 1 मिनट रुकेंगे। हाँ बोलिए सर आप। ये क्या करता है, कभी बोलता है कि मैं वसूली करता हूँ, कभी बोलता है मैं ये करता हूँ, कभी बोलता है मैं वो करता हूँ। समझ में नहीं आता क्या करता है। फिर बोलता है कि हमारे पास स्कीम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। भाई सीरियसली इतना दिमाग खा लिया भाई ये बंदे ने, हैचेट अपने आप निकल गई। देखा इनके लाइक बोलते हैं ना मसल्स पे इनका काबू नहीं है। नहीं कोई बात नहीं सर, वैसा होता है कभी अंडर टू मच ऑफ स्ट्रेस वगैरह। सर आप करते क्या वैसे काम? अरे एज की वजह से भी होता होगा ना। अरे मैं सीरियसली बोलूँ, मैं 2 दिन हुए मैं शहर में लैंड हुआ हूँ। 2 दिन अच्छा। मतलब पहले दिन इनके साथ घूम रहा था, इनका कोई एक और दोस्त था शौकीन पटेल नाम का। फिर बाद में आज जब मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने सोचा कि लोग अच्छे हैं कि मिलूंगा, बात करूंगा, मस्ती करूंगा थोड़ा सा इनके साथ। बात करूंगा। बट ये हैचेट निकल कौन बात करता है। बट ये तो ऐसा हो रहा है ना कि ये लोग कुछ और ही पका रहे हैं। मतलब ये धूड़ी वाला बंदा ज़्यादा। डाउन बाय डाउन। 1 मिनट सर, 1 मिनट आप लेटे रहिए। आपके वाइटल सर मॉनिटर करता हूँ थोड़ी देर में। इफ थोड़ा सा हाई है ब्लड प्रेशर वगैरह, देखेंगे थोड़ी देर लेटे रहिए। रेड्यूस होने का आई चेक यू, ठीक है? सर जी ऐसा एक्सीडेंट हो गया था। अबे इनके पास टैब है भाई। क्या हुआ ऑफिसर इनको? जरा कांतिलाल टैब बताना जरा। टैब दिखाओ तुम्हारा लैपटॉप है क्या? एक जरा टैब लैपटॉप दे दो। ऑफिसर क्या हुआ इनको? अरे ऑफिसर वो बता। ये पिट गए बस। बड़ा तेरी बेइज्जती की आग। ओके देखो आपको बढ़ाओ। देखेगा इधर मुंह पे बस। बड़ा पूरे सिटी को चिल्ला के अपने लेफ्ट स्कीम साइड बता से दे मुक्का बे। पड़ा था। वही सर दिख रहा है थोड़े कोमा में है क्या? नहीं रे, ठीक इसका बीपी बढ़ गया था। सर उनको थोड़ी देर लेटने दीजिए, ठीक है? डिस्टर्ब मत करिए। नहीं उनका वो क्या बोलते हैं, वो हार्ट देख रहे हैं हम। 80 120 80 120 जा रहा है। ऊपर नहीं होता, बहुत अंदर होता है। तुम कैसे देख रहे हो? अरे वो उसने वो लगाया ना मॉनिटर करने के लिए, वो तारा तुरा कुछ चिपकाया है इसने तो छाती वो पे। करती थी। हाँ वही सर। ये ऑफिसर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है भाई। डॉक्टर हाउ आर यू? आई एम रियली वेरी डॉक्टर फाइन। कॉप प्रायोरिटी। यप यहाँ पे भी वही चल रहा है सर, सब कॉप्स ही है। चुलू ले गया। मेरे को तो लग रहा है डॉक्टर ये कॉप्स के शायद कुछ चक्कर हो गया है। डॉक्टर ओके ऑलमोस्ट डन सर। इनको तो लाइक ज्यादा सिर्फ पंच का ही था। ये भी फाइन। क्या बोल रहा थोड़ा खिसक नहीं बुढ़ा मेरे से लेट जाता है। ठीक हो गई है। अबे मेरे साथ बेड पे सोएगा क्या? दिमाग खिसक गया क्या तेरा? छी भाई। देखा खुद ही बात कर रहा है। देखा खुद ही बात कर रहा है ये सब। सी मैं अच्छे से बात करूं तभी भी इसमें बुरा ही सोचना। सर हमारे पास पिल बॉक्स बहुत है सर, आपको कितना पीना पी सकते हो पता है ना? पिल बॉक्स में पानी नहीं पी सकते। हाँ पिल बॉक्स में पानी फुकट है, जितना मांगता है उतना पियो। हम लोग भी वही करते हैं। The car man. Hello, ma'am. Doctor saved me. Yep sir. What is your name, ma'am? बुढ़ाओ I can see. पूरे सबको चिल्ला के अपनी स्कीम बता दे बे। क्या? कौन सी स्कीम? हाँ कौन सी स्कीम? डर लग रहा है इसको बता। मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली अभी तक। हाँ तू ठीक है बुढ़ाओ अभी ठीक है। बूढ़ा हो किसको बोल रहा है बे? नहीं तेरे को नहीं बोल रहा, मैं उसको बोल रहा हूँ। बूढ़ा वो देख उसका वाला क्या बोलते हैं ग्रे हुआ है। तुम तो जवान हो भाई, तुम जवान हो। तुम ग्रेट हो। बस तोन निकली हुई है। अगर हाँ बस तेरी तोन निकली हुई है। तेरे को सुकड़ा बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को बुढ़ाओ बोलोगे ना, अगर मेरे को बुढ़ाओ बोलोगे तो तुम तो बच्चे निकलोगे।
नहीं मैं उसको बोल रहा हूँ तुम ज्यादा अरे मैं अपना नाम नहीं बताया अपना, मैं कैडेट करण शेखावत। और अब कब आपने कब ज्वाइन किया? भाई कांति सर बुली मत करो। बेटा ये बसड़ मत करो, उठ के मारूंगा। पहले हट तो जाओ। प्लीज मेरे applying bandages and walking with नेवर माइंड। कांति डेंजर है ये। कांति सिम तुम्हारे पीढ़ी में सिम भी खत्म नहीं हो रहा है। क्या होता है सर कॉप प्रायोरिटी इतना टाइम क्यों लग रही है? बहुत डेंजर भाई है। प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट सर विच कॉप है यार बेचारे। ऑफिसर्स तो एनीवे सिम भी सर, करते कितने का रहते क्यों हैं। है बस आप डॉक्टर? देख रहे हो बस आप देख रहे हो अच्छा इसमें भी एक का प्रायोरिटी में प्रायोरिटी। वाह भाई अब वो डॉक्टर वीआईपी क्यों है भाई नंबर वो। बोलो? आ गया तेरा आ गया। ये मोन कौन कर रहा है? में आ जा जैसा अरे मैं यही सोच रहा हूँ किसको रिक्रूट कर लेते हैं लोग, हो क्या रहा है आजकल? करण सर आपके $200 चार्जेस होते हैं। अरे शर्लॉक सर ट्रेनिंग नहीं हुई मेरी अभी तक। भाई ये क्यों क्यों मोन कर रहा है? मेरा 14 नाम लेके 14 तक एग्जाम देते चलो फट। क्या नाम है तुम्हारा? विजय खन्ना। कान फाड़ दिया। अरे सर क्या वाइटल्स नॉर्मल हो गए ये तो इन्होंने ये निकाल दिया यप था। सर आपका बीपी भी रिड्यूस होता है। यप सर थोड़ा उंगली मले मत करो यार, बेचारों को थोड़ा जिंदगी में सुकून दो। मैंने कुछ नहीं उंगली किया इसको, ये मेरा छोटे बड़े भाई जैसा ओके दिस माइट ठीक है सर। अभी तो ब्लड प्रेशर थोड़ा रिड्यूस्ड है बट मतलब नॉर्मल नहीं है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। डॉक्टर को बोल मेरा ध्यान रखिए, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए आप लोग, ठीक है? डोंट वरी। पैंट उतारनी पड़ेगी, रुको जरा। ठीक है डॉक्टर। इट्स बेट, ठीक है? थोड़ा रेस्ट लीजिए, कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रेस आउट मत होइए। स्ट्रेस के लिए सिगरेट विगरेट मत शुरू कर दीजिए। इसके लिए बुके लेके आया अभी। मैं आपको थोड़ा सा फॉर नाउ हेडेक के लिए आई विल गिव यू पेन किलर एंड यू विल बी फाइन। ओके पुर्जा ढीला कर दिया तुमने यार। ओ डॉक्टर और एक पुर्जे वाला इंसान आ गया, वो देखो। डॉक्टर इसका सर के टूट गया। ये लीजिए सर, these are the painkillers, please take it and you will be fine after this. थैंक यू इसको पानी से पी लीजिए। वही तो मेरे लाइक मैंने कहा आप ये ध्यान रखिए। गेट वेल सुन, नो स्ट्रेस वगैरह एंड यू विल बी फाइन। यस हां थैंक यू सो Winter charges will be $200, you can pay me on 261। ठीक है। गए क्या? गेट वेल सुन। एक्सक्यूज मी, हटिए सर। वही तो मैं आपको बोला कुछ पुर्जा भी मत हिला, आपने पुर्जा हिला दिया उनका। नहीं एक साइड से करके दूसरी साइड से सही कर दिया था। ये भी मार रहा है, कब पर्सनल लेके बैठा है। ये मास्क पहन के क्यों लेटा हुआ है वैसे? सर इनका मास्क बताऊं मैं सोचा ठीक है। आयुष हेलो हिम लो मैं जरा गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे डॉक्टर एक चीज बताइए, सुन भाई, ये जो महाशय है यहाँ पे, इन्होंने जो कोट वगैरह पहन के रखा है, इनको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती? गर्मी का मौसम है। नहीं मैं जा रहा हूं। लॉस एंटोस में थोड़ी प्रायोरिटी। अरे मैं क्यों, मैं पहला था डॉक्टर प्लीज। आई टुक ओवर कॉप प्रायो आई सेड। अरे सुन ले चल रहा बीच में थोड़ी क्लच पड़ गएंगे। नहीं आई सेड इट इज कॉप प्रायो, आई डोंट केयर। जरा अर्जेंट मेरे को जाना है। अरे मेरे कनेक्टिंग पे हूं मैं कनेक्टिंग पे हूं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर उसको बर्फ पे रख के इधर आओ यार। आ रहा ऑफिसर कनेक्टिंग टू द डॉक्टर। आई गेस आपको अच्छा अरे जाना पड़ेगा अर्जेंट। ठीक वो सीन है। मैं जा रहा हूं। दादा बिच्छू किधर है? तो मेरे को गाड़ी तो लेके दे। आजा इधर। शांत आपको क्रीम लगा दिया। मैं बोल रहा हूँ ये दादा ने अच्छा आया, ऑफिसर्स रिक्रूट करने की जरूरत है शायद। अरे नहीं कुछ नहीं मतलब नहीं यार, कनेक्टिंग बुलेट कर रहा है मेरे को। भाई तेरा मून करना बंद हुआ? क्या नाम है इसका? डॉक्टर ड्राइविंग बैड। कबीला केजे। सर पापी सर भी क्या गलत कर रहे हो? थैंक यू डॉक्टर। अरे मैच पापी सर मेरे ऑफिसर्स पे। यप I'm all my ma'am पापी। सर व्हाट हैपेंड? पापी कल तूफान आ रहा, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ सर। किधर हो गए तुम लोग? बार ये लो गाड़ी की चाबी लो। ये किधर गया?
ये झाड़ियों में छुपा है। क्यों? क्या पता, वो बोला आया मैं 2 मिनट में। झाड़ियों में कुछ कर रहा है क्या? शायद से पटी। छी रुको, चलो मैं जाता हूँ सोने। हाँ चलो मिलते हैं। कौन सा झाड़ू में है? हाँ पीछे पीछे पीछे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। Yeah, I'm currently gonna take 2 mics. I'm currently getting shell updated. Just give me like 2 minutes. I'll be there. ये वाली झाड़ियों में, ये वाली। इधर किधर तो इधर है क्या? दिख गया। भाई मैं चार्जर निकाल रहा हूँ, तू चार्जर में रह। तो गुड नाइट। गुड नाइट। फायदा नहीं है भाई, चलो हटो। ऑलमोस्ट डन, चलिए हो गया ये। अब घर जाके रह। अरे ठीक है। डॉक्टर ये कोमा में चला गया शायद। नहीं मेरा क्यों रुके, मैं नहीं, बैंडेज नहीं, खत्म हो गया, बाद में आता हूँ। अरे तेरी बहस की। नैन्सी बुला रहा है मेरे को। नैन्सी सीधा, अरे बात। नैन्सी बुला रहा है मेरे। कितना हो डॉक्टर इनका? फ्री 200 ऑन 261। ये फ्री मैं बहुत टाइम से क्यों में था, फ्री अभी। चलो आओ अब दे दियो। सर इनको लिटा दीजिए। और कोमा में भाई चला साहब गया आपका नाम शायद। क्या है? मेरा हाँ तात्या विंसु। क्या? तात्या विंसु जो भी हो सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बाय बाय। है भाई, ये मीठा पान था क्या? पता नहीं सर आपको। सर कॉम्प्लीमेंट मिला ना, से कुछ बुरा तो नहीं कहा उसमें। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसे वही सर, जिंदगी में सब चीज पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ हम तो पॉजिटिव ही लेते हैं। ये देखो भाई, ये कोमा में चला गया। छोटी मैं लेता हूँ, छोटी अब मैं कह इसको मैं बोल रहा हूँ ना, इसको 2-4 घोड़े के इंजेक्शन लगा दो। घोड़ा पड़ जाओ। घोड़ा लगा के क्या करूँ बता। आप थोड़ा पीछे हट जाइए, थोड़ा ऐसे ही रहने वाला। इनका नाम क्या है सर वैसे? चार्ली। ओह एक्सक्यूज मी मिस्टर चार्ली लेव। ये सच में कौन है क्या? ओह हेलो मैम सर, चार्ली। हेलो एक्सक्यूज मी। ये कोमा में चला गया शायद, देख लो जरा इसको क्या हो गया है। ये सब बुक ठीक है बन के सर, खड़ा हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वैसे भी वो यहाँ पर खड़ा है ना। मैं तो बोल इनको रहा हूँ ना लेके इसको, जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इसको घोड़े का इंजेक्शन दे दो। सर रात में मुश्किल पड़ेगी जिसके साथ। वैसे जितना इसने परेशान किया है, इसको तो घोड़े का इंजेक्शन देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे इसने मेरे साथ बिहेव किया, इसको घोड़े का इंजेक्शन देना चाहिए। तो मतलब सुन के गलत लग रहा है। ठीक है एनीवेज, मैं आता हूँ सर। एनीवे फीस फाइन आप इनके साथ ही रहिए, ठीक है? मुझे कॉल आया है, अर्जेंट जाना है। ये नो वरीज। इसको जाके रोड पे फेंक देता हूँ। बढ़िया गाड़ी है, क्या नाम है गाड़ी का? हेलो, गाड़ी बढ़िया है, क्या नाम है गाड़ी का? बेंटले। नाइस। केजे किधर हो? हेलो, आजा। मैं छोड़ के आऊँ क्या? लाइन है क्या अभी शहर में? नहीं मैं जाम भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सीन होगा? सोल्यूशन है इसका?
कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा एक काम, मुझे कैरी कर लेना फिर मेरे पास मेरे सर पे। पीछे बात से सुन लेना, इजी है, पीछे बात से सुन ले, पीछे बात से सुन ले भाई भाई ये चल क्या रहा है? ऑफिसर्स क्यों ठिल रहे हैं इतने? सर थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स व्हाई। आ गया क्या चार्ली? हाँ बोलो बोलो। बैठ गाड़ी में, मैं सोने जाने अरे वाला था। मैं भी वही करने वाला था। नहीं एक्चुअली जरा एक्स्ट्रा इमरजेंसी आ गया था, तो जा ना। मेडिसिन अच्छा मेडिसिन लेना था। अच्छा। चलो अभी किधर जाना है बताओ। कुछ नहीं, मैं तो सोने जाने के लिए सोच रहा था। चलो ये ये देखो देखो। ये रेस चल रही है, रेस के लिए गाड़ियां मांगती है यार, अपने पास गाड़ियां ही नहीं है। तुमको पता है कुछ क्या? लोगों ने अपने को रात कीड़े नाम दिया है। क्यों? पता नहीं। और वो लोग कौन है? कोई पुराने पहचान वाले क्या? काइंड ऑफ नई और हाँ भी। समझ गए। You know, we call that things in English midnight kids. ये चलो चलो। तुम हो आज फ्री पे, मेल पे आ रहे हो? नहीं अभी नहीं, अभी मैं सोने जाऊंगा। ठीक ठीक चलेगा। चलो चलो गुड नाइट, गुड नाइट। सी यू टुमारो। यस यस बाय बाय। बुढ़ाओ पागल मत होइए ठीक है। बुढ़ाओ चाबी दियो इसकी, जाके मच्छी पकड़ लो तब तक थोड़ा टाइम। अरे आई थिंक वो सिटी से बाहर गया होगा। बुढ़ाओ बाय बुढ़ाओ। बाय बाय। बुढ़ाओ आहिस्ते जाना, ठिलना मत किधर जाते जाते समय। ठीक है जाओ। नहीं हो रहा है क्या तुम? बुढ़ाओ नहीं हो रहा है क्या? पहले जैसी ताकत नहीं रही क्या अभी? बाहर निकलो फिर बता दो ताकत क्या होती है। भाई जी ये मार रहे, भाई जी ये मार रहे, भाई जी बचाओ। भाई मैं कैसे बचाऊं यार, मैं तो मेरे पास तो खुद कुछ नहीं। सॉरी बुढ़ाओ, सारी भाई मिलते हैं भाई, बाय बुढ़ाओ। सुलाने को है। जा जा। रुको मेरे को बिठा लो। रेडियो क्या है? 78.6। चलो क्या करना है गाइस, अभी जाना है सोने। गोकू तो आएगा नहीं आएगा, गोकू के साथ सिचुएशन चल रहा होगा अभी। पीडी में सिचुएशन चल रहा होगा। क्या करना है, जाना है क्या? कितने ऑफिसर से देखते हैं, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। Out in 4 seconds. 3, 2, he's out. I don't see any blocks. Got it. Yeah, my bad. Charger was blocking it. Never mind. हेलो, क्या चल रहा है शिंदे सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Currently heading आपके गले में eastbound कुछ on Lake खराश लग Point रही है। right? विक्स खा लो Direct विक्स। dispatch. नहीं आपके गले में लग रही है, मेरे Yeah, नहीं। done for. Yes. मेरे गले में खराश लग रही है। थोड़ी। काहे को? गला खोल दो तब थोड़ी। Is पता नहीं यार। someone else having issues with the शायद roads over कहीं here? वहाँ पे गड़बड़ हो गई शायद। I mean, देखता हूँ मैं, देखता never हूँ। mind. आओ। You visual. 50 with a rock. Rock. Hey fam. Big ass rock. 12:30 बजे ना। लेट्स गो। Southbound Alta Street. कल करते Downtown हैं Wynwood. गोको और यार पे कल करते हैं, मेरे को वही लग रहा है।
बहुत लेट हो गया For that अभी same सो alleyway, जाता हूँ मैं Sherlock. I need you around if he Okay. goes. No need of comms. Focus on driving now. All Okay, three calm, are will on do. tail. ये कर लूँ चलो anyway leave it Reason for the AD, by the way, dispatch. 69. Hey, if I'm Evolving copying. in Did between 69 multiple pets. he pet you guys? Yeah, he Yeah, did. 10-4. Next time he goes on the highway, I'll go for a soft pet. No. 10. Don't pin. On his tail. I don't understand the reason for 360. It's so easy. Yeah, same traffic, that's why I did it as well. चलो Clearing guys thank you so much for left. watching If I'm taking lead. we'll see you tomorrow और Going for a anyway jump, हम actually. लोग Go for का it, Tabby. थोड़ा गैप होने वाला है in between again so हम कल भी आएंगे जो अल्टरनेट डे वाला अपना फंडा था उसको थोड़े टाइम के लिए मैंने अभी पॉज किया हुआ है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स प्रोबब्ली विल स्टार्ट अल्टरनेट डे स्ट्रीमिंग अगेन और कोर्ट केस जो है आज की क्या डेट है अभी 13 लग गई ना 14 को भी नेक्स्ट कोर्ट केस होगा नेक्स्ट कोर्ट केस विल बी हेल्ड ऑन द 14 कल गोकू आएगा 14 को कोर्ट केस होगा अभी 14 का अनाउंसमेंट डाल देता हूँ मैं तब तक के लिए गाइस बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सनी थैंक यू सो मच फॉर Canadian $2 thank you so much bro Big way when I'm walking, pray when I'm talking this to you. Fight for my